Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello guys, I'm Dhiraj and I welcome you all in the Testbook.com, and I'm here to provide the best I have. So once again, I'm in front of you with another brand new session, that is Gatanical Gatathon for thermal science. And my dear, believe me that today's session is going to be very good, बहुत अच्छे से जाएगा, and I will try to revise each and every concept related to the thermodynamics, right? So today we are going to cover all the each and every topic, पूरा टच करेंगे, पूरा डेप्थ में जाके पूरा रिवाइज कर लेंगे. And my dear, my main focus will be on the formulas. I will try, मैंने जो डिजाइन की है syllabus of this particular Gatathon for Gatanical, that is my dear, it's somewhat like कि हर एक फॉर्मूला कवर हो जाए. And I have done the value addition from the previous year papers as well. And जो भी बाद के पेपर है उसका सबका जो है टोटल एडिशन करके लेकर आया हूं. So guys, before starting the session, I can see that yes, few people have already joined. So guys, those who have joined, they can do hit like, share, and subscribe. And my dear, most important thing, that you have to share the session so that your friends and the family member, those who are looking for the gate mechanical, and my dear, especially for thermal science, they will get benefited of this session, right, bacha party? Yes. So my dear, we are going to start just within 1 minute. Okay, 1 minute के अंदर शुरू कर देंगे हम लोग. So before that, I want to let you know, guys, if you are interested for gate mechanical live coaching, my dear, then it is the best opportunity for you guys. You are getting the gate mechanical live coaching just for rupees 3,999 rupees, right? And you can explore the demo and preview classes, which is available free of cost in the website of the textbook as well as in the app. Okay. And my dear, supposed to be your diploma holder, my dear, then something special for you guys, that is SSCJ mechanical live coaching is going on. So you can fill the application form, and the link of that application form has put in the description of this video, my dear. Okay, and whatever the query you have, that will get sorted out by the textbook counselor. You don't worry about it. Just the only thing you have to require, that is you have to fill the application form. And my dear, supposed to be your preparation has been done, you need more practice, then my dear, you can just buy the textbook pass, and it is just for rupees 299. And what is name in that? There is a Santa special gift, my dear, and you're getting the validity 12 plus 2 months, that is 14 months, right? And my dear, in addition to that, for your motivational music, we have taken care of it. And my dear, we are giving 3 months Ghana plus subscription free of cost. Okay, so guys, these are the various offers provided by the Testbook.com for you guys. So get benefit of this session, right, bacha party? So my dear, we are going to start. अभी शुरू करेंगे इसको. Okay, so bacha party, here we go. So my dear, here we go. So first of all, the basics of thermodynamics. I will start from the basic, right? So my dear, what is the basics of thermodynamics? I want to tell you, my dear, in thermodynamics, what we does. Actually, thermodynamics is nothing but study of thrice E. Thrice E means what, my dear? One means energy. Another means, that is what, my dear? Equilibrium. What? Equilibrium. And another E means, my dear, entropy. 3 E के बारे में पढ़ते हैं हम लोग थर्मो में, that we are studying. Very good morning, Mahendra. You are most welcome. So my dear, 3 E's के बारे में. Thermodynamics is all about study of 3 E's, and it is nothing but energy, equilibrium, and entropy, right? Okay, my dear. Now, what the thermodynamics means? What is thermodynamics? So some people say that conversion of Q to W, that is heat to work or work to heat, that is nothing but what, my dear? Thermodynamics. Or it will deals with the conversion of one form of energy into another useful form of energy, right? So my dear, I have defined this in such a way that thermodynamics is nothing but it's a fundamental subject, right, which describes various basic laws which governs the various physical process and which are utilized to convert one form of energy into the another useful form of energy. It also established the relationship between various physical properties that has been affected during this processes, right, my dear? That means it is nothing but a fundamental subject. बहुत ही simple सा subject है, fundamental subject है, जो कि describe करता है बहुत सारे basic laws को, various basic laws, और we can say that, and that जो laws है, that governs the various physical process, and that physical process are utilized to convert one form of energy into the other useful form of energy, right? The useful form, that means आप कोई भी form होगा उसको convert कर रहे होगे किसी another useful form. जैसे कि आपने chemical energy ली fuel की, and that you are converted into heat energy, and my dear, then heat से किसमें convert करते हैं?
it is converted into mechanical, right now. And it also established the relationship between, that means what, my dear, that we have got, that is what it established the relation between the pressure, temperature, entropy, enthalpy, and all those kind of things, right? So iske bare mein, okay, bachcha party, this is all about thermodynamics, okay. Now, my dear, system की बात कर लेते हैं. So sometimes people told me that what, my dear, finite quantity of matter is a system. And what, my dear, when there's a finite quantity of matter, that means supposed to be I have this, okay, I have given the diagram as well. So supposed to be, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँगा, इस सिस्टम की बात कर रहा हूँगा, so it is nothing but it has a boundary, and इसके अंदर कोई भी एक finite quantity of mass आएगा, that is nothing but what, बच्चा, finite quantity, that means it is nothing but a system, right? So my dear, when I say it's a finite quantity of matter, so at that time I'm not going to take care of the volume. I'm going to just focus, my attention will be on what, my dear, amount of mass inside the system, like this only here, right? And such a system is known as what, my dear, control mass system. It is known as what, control mass system, because here the mass is fixed, and this type of approach is utilized for closed system such as piston cylinder arrangement without ports, refrigeration cycle, etc. Okay, so that is what, my dear, it is nothing but control mass system, okay. And my dear, when we can say that is what, fixed region in a space is known as system, that means what, in the supposed to be I have an open system, like I have given I have taken the example as well in the next diagram. You can see that compressor is there, air is coming from here, and air is going out from here, right? यहाँ से air अंदर आ रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है, right बच्चा पार्टी, यहाँ से air अंदर आएगी, यहाँ से, that means the mass, the quantity of mass is not going to be fixed inside the compressor, right? It is continuously changing. So my dear, what we are doing in that case, we are selecting a some imaginary system, that is I have done, that is not, I have tried to fix the volume like this. You can just see the dotted line, that means what, and my focus will be on what, my dear, volume. मेरा फोकस किस पे होगा, वॉल्यूम पे. Why not on mass? Because the mass is not fixed, okay. So the same thing I have written over here, that here we select volume, okay, we select volume, and this approach is applied in open system and also known as control volume, that is fixed system, okay. I hope that means there are two ways to define that system, that is finite quantity of matter, or you can see the fixed region in space. Both are system. One is control mass, another one is control volume approach, and both are applicable, right? First one is just for where the quantity of mass is not going to be changed, that means it is going to be fixed, वहां पे हम apply करेंगे control mass. And my dear, wherever the quantity of mass is changing, so at that time we have to select, or we have to fix the region in a space, that is imaginary region, and that is nothing but what, my dear, control volume system, okay. Mahendra, clear? Very good. I hope everybody it's clear to you. So this is all about the approaches, okay, and that I have given the example as well, my dear. You can see here that I have taken the example, that is flow of mass is continuous, so it is complex to select a finite quantity of mass, so we choose the fixed volume shown by a dotted line. Here I have already explained this, right? Bacha buddy, I hope you got it now. So here, now I have taken the another one. Sometimes I have taken the another example. Sometimes the volume is fixed, that means ये जो वॉल्यूम होगा, that is sometimes it's fixed and sometimes it's movable, like piston cylinder arrangement with ports shown in the figure here, my dear. यहाँ पे ports है, mass अंदर आएगा, mass बाहर जाएगा, but at the same time, what, my dear, piston is going to move from TDC to BDC, so definitely the volume is going to be changed. So that's why I said sometimes in a control volume system, volume is sometimes it remains fixed or sometimes it is also changing. So that's what I said over here, okay. हाँ जी बच्चा पार्टी, it's clear? Very good. I'll go ahead. My dear, see, now we have closed system, so ये सब आपको पता है. I think there is nothing to define, that is closed system, that all allows transfer of energy but not mass. Here isolated, neither allows transfer of mass nor energy, that is thermoflask, right? Bacha party. And open system, there is an open system as well, right? So open system में क्या होगा? उन open system, what, my dear? Open system में क्या होगा? Open system में both E and mass, that is transfer of energy and mass is allowed. That is nothing but what, bacha? That will be your open system, right? And यहाँ पे I have defined that is homogeneous and heterogeneous. You can see here homogeneous and heterogeneous. If the system is satisfy the following condition, अगर ये दो condition satisfy करेगा, that is what, chemical composition
should be same throughout the system. Another condition, physical structure should be same throughout. Because see, here it is liquid. That means its chemical composition all over it should be H2O, right? So definitely it is liquid. So यहाँ पे भी आप लोगों को chemical that is physical structure that will same. यहाँ पे भी लोगे तो भी physical structure same. So that's why it will be what, my dear, homogeneous system. But supposed to be I have taken the mixture of water and ice. So what will happen, my dear? See, the chemical composition will remain same. That is, it is H2O for both. Ice cubes का भी H2O होगा, इसका भी H2O होगा, am I right? दोनों का क्या होगा बच्चा? इसका भी H2O होगा, इसका भी H2O होगा. The only thing is that there is change in physical structure. बहुत ice cube का structure जो होगा that is quite very well organized. बहुत organized structure होगा, right? Like this, right? But my dear, इसका जो होगा liquid का जो होगा that is water का that is quite in random little bit. There is a randomness, right? थोड़ा सा entropy ज्यादा होगा. So that's why it should be what, my dear? ये क्या होगा हमारा heterogeneous system. Okay, बच्चा पार्टी. I hope it's clear to you. Now I'll go for the next. Surrounding. I told you everything external to the system is nothing but surrounding. You can see here boundary. A boundary is a hypothetical envelope, and it may be real, imaginary, movable, fixed. Right? हाँ बच्चा पार्टी. Okay, here we go for the next. System plus surrounding is nothing but universe for thermodynamics. Thermodynamics में universe मतलब ब्रह्मांड नहीं है. It means what? System plus surrounding, that is nothing but universe. Boundary, that I already told you, hypothetical envelope that separate the system from surrounding. It may be real or imaginary, fixed or movable, right? My dear, we have two approaches that I already explained. Microscopic approach. In this approach, time average behavior of molecules taken into consideration, right? Time average behavior. That means we are taking average of the molecules, right? जो भी behavior होगा उनका average देंगे. Supposed to be different molecules have different pressure, different temperature, different kinetic energy. So what we are going to do, we are going to take a sum of it and divide by the number of atoms or number of molecules, right? So that is nothing but macro. वो क्या कहलाती है? Macro कहलाती है. Okay बच्चा? And after that, my dear, we have this approach is resulting classical thermodynamics, and the thermodynamics in which we apply this approach, that is nothing but उसको क्या बोलेंगे? Classical thermodynamics. Okay. And my dear, this approach is applied till the continuum concept is valid. जब तक continuum concept valid रहेगा तब तक इस चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे. Now the question is कि सर continuum concept क्या होता है? What is continuum concept? Continuum concept क्या होगी? So I want to let you know, my dear. See, so continuum concept क्या होता है? Continuous distribution of matter without any void or blank space. Supposed to be आपके पास में ये आपका एक सिस्टम है, supposed to be. So यहाँ पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए मास का, मतलब देयर इज नो गैप. यहाँ पे आपको जो गैप दिख रहा है ये कोई गैप नहीं रहेगा, मतलब पूरा पूरा वो रहेगा. सो इसको आप नहीं बोल पाएंगे कंटिन्यूअस, राइट? कंटिन्यूम कंसेप्ट में मतलब ये पूरा पूरा जो है कोई भी गैप नहीं होगा, दैट इज विदाउट एनी वॉइड और समथिंग. सो दैट विल बी व्हाट बच्चा? वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ये पूरा कोई गैप नहीं होगा यहाँ पे. सो दैट इज नथिंग बट योर कंटिन्यूम कंसेप्ट, राइट? एंड ये कंटिन्यूम कंसेप्ट अब कब तक वैलिड होता है? See, microscopic approach is valid till the continuum concept is valid, and continuum concept कब तक valid होगा? जब तक mean free path is much lesser than system dimension. My dear, now first you should try to understand, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको what is mean by mean free path, right? And then we'll come to that कि what is mean by that line. इस line का meaning क्या है? That we'll try to understand. ठीक है? Good morning तन्मय. So my dears, देखिए अभी ध्यान से. मीन फ्री पाथ जो होता है, सपोज टू बी दिस इज योर सिस्टम, राइट है? दिस इज योर सिस्टम, ठीक है? इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट? एटम्स होंगे. सो दैट इज व्हाट विल हैपन, माय डियर? मींस अगर आप देखें सो सिस्टम के डायमेंशन, दैट मींस इट शुड बी गोइंग टू बी लेंथ एंड इट शुड हैव पर्टिकुलर शेप, पर्टिकुलर बाउंड्री, राइट? तो सिस्टम के अंदर होना चाहिए, राइट? सो माय डियर, अब क्या होगा? इन दोनों के बीच कोलिजन होगा. ये मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? एंड दे आर इन रैंडम मोशन, सो डेफिनेटली there should be a collision between them. So my dear, जब collision होगा, so distance travel by the molecules between the two successive collision. जब two successive collision के बाद definitely अगर ये दो मॉलिक्यूल आपस में भिड़ेंगे तो बाद में दूर भी तो जाएंगे. So दो successive collision के बाद में ये जो distance travel करेंगे, ये जो distance travel कर लेंगे कब? After two successive collision. So that distance is nothing but what बच्चा? That distance is going to be nothing but what, my dear? Mean free path. So now this line explains कि ये mean free path जो होगा that is quite very less, बहुत छोटा होगा as compared to system dimension. My dear, पता चला ये सिस्टम है आपका, ठीक है? ये सिस्टम है. सपोज टू बी ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में टकराए, एंड टकराने के बाद
दो सक्सेसिव कोलिजन के बाद ये सपोज टू बी इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया कि ये सिस्टम के बाहर चले गए। अगर ये सिस्टम के बाहर चले गए सो डेफिनेटली देयर इज अ क्रिएशन ऑफ वॉइड, बिकॉज कुछ मास रिमूवल हो गया है सिस्टम से, सो डेफिनेटली वहां वॉइड क्रिएशन होगा। एंड अगर वॉइड क्रिएशन हो गया तो माय डियर कंटीन्यूम कांसेप्ट वैलिड नहीं रहेगा, बिकॉज कंटीन्यूम कांसेप्ट इटसेल्फ describe that is a continuous distribution without space or without any void. Am I right बच्चा? I hope you got it. Tanmay Mahendra, please tell me, had you got it? कि कोई भी अगर वहां पे स्पेस आया, कोई भी खाली जगह हो गई, तो मतलब का मतलब हो गया कि भाई साहब वो वहां पे, ठीक है, ओके ओके बच्चा पार्टी, आई होप यू गॉट इट, ओके वेरी गुड। सो इसका मतलब यही है कि जो कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो सिस्टम की बाउंड्रीज के अंदर होगा। इसमें अगर एक लाइन ये भी डाल सकता है, एमएसक्यू क्वेश्चन यहां से बन सकता है बहुत अच्छा, कि कंटीन्यूम कंसीडर वैलिड व्हेन पार्टिकल्स आर विद इन द सिस्टम, इज इट ट्रू और फॉल्स? यू सेड ट्रू, बिकॉज अगर बाहर हो गया तो वॉइड क्रिएशन होगा सिस्टम के अंदर, एंड दैट विल लीड टू द डिस्क्वालिफिकेशन दैट इज ऑफ कंटीन्यूम कंसेप्ट for that particular system, right? Here I go for next. Now my dear, we'll talk about microscopic approach. Microscopic, I already told you macroscopic means supposed to be we are a group of friends, आप लोग गए रेस्टोरेंट में, खाना वाना खाया, बिल आया 1200, चार फ्रेंड्स से डिवाइड कर लिया, भले ही किसी ने कम खाया हो किसी ने ज्यादा खाया हो, लेकिन वहां पे एवरेज लिया गया, दैट इज मैक्रोस्कोपिक, दैट इज नोन एज क्लासिकल, राइट? माय डियर, माइक्रोस्कोपिक में क्या होगा, चार दोस्त गए, सपोज टू एग्जांपल दे रहा हूं, डे टू डे लाइफ में आप लोग गए रेस्टोरेंट, आप लोगों ने खाना वाना खाया, बिल आया 1200 रुपीज। अब आपने बोला कि नहीं मैंने तो 200 का खाया, मैं तो 200 ही दूंगा, मैं नहीं दूंगा 400 रुपए, सॉरी 300 रुपए, चार लोग हैं तो 1200 मतलब 300 रुपीज पर एवरेज आता है। सो यू से नहीं मैंने तो 200 का खाया तो डेफिनेटली आई विल पे ओनली 200 रुपीज, आई एम नॉट गोइंग टू पे 400 or 300, right? So that approach is nothing but microscopic approach, and the same thing is happening. That is what in this approach, individual molecular behavior, that's what I said, that you have to pay your bills individually, right? So यहाँ पे भी क्या होगा, that in this what we are taking, whatever the activities are happening that on molecular level, so we are considering that only, we are not taking an average, right? So बच्चा पार्टी वही चीज बोली गई है, this approach results in a statistical thermodynamics and it is applied where the gases have low density, जहां पे low density होगी वहां पे इसको हम अप्लाई करेंगे, and that is what microscopic approach, okay बच्चा पार्टी, and it is known as statistical thermodynamics, and this approach wherever this approach is applicable, but I want to tell you हमारे सिलेबस में we are going to use only for 10 to 20%, सिर्फ 10 से 20% यूज है, 80 to 90% we are using macroscopic, okay? My dear, properties, what is properties now? Okay, anybody have any doubts, please let me know बच्चा पार्टी, okay? So properties represents the characteristic of system to fix states. अगर कोई भी सिस्टम है, suppose to be as this is a system, so my dear अगर आपको इसका स्टेट फिक्स करना है, then you have to tell me about its pressure, temperature, volume, enthalpy, entropy, and so many properties. So that is nothing but these are the characteristics now. So these characteristics are nothing but what, my dear? Properties. Okay, types of properties. अब types of properties की बात करूं बच्चा, so my dear, we have extensive property and that is also known as extrinsic property, right? And these properties depend on the extent of mass. किस पे डिपेंड करती हैं? extent of mass पे। एग्जांपल आपको पता है, that is volume, mass, enthalpy, entropy, heat capacity, etc. इंटेंसिव, दैट इज आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक, नाम याद रखिएगा, दूसरे नाम इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, दैट याद रखिएगा कि एक्सटेंसिव का EXT, दैट इज एक्सटेंट ऑफ मास, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ मास, दैट इज नथिंग बट एक्सटेंसिव। इंटेंसिव का INT को रिप्लेस कर दो IND से, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, दैट इज नथिंग बट व्हाट बच्चा, दैट इज नथिंग बट व्हाट, इंट्रिंसिक और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड एग्जांपल्स, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वेलोसिटी। नाउ सम पीपल हैव डाउट कि सर रो में तो मास आता है तो डेफिनेटली एक्सटेंसिव होगा, नहीं। अरे भैया सिंपल सी बात है, कोई भी प्रॉपर्टी जब आप लोगे उसको एक बॉक्स में डालना, उस बॉक्स को डिवाइड कर देना दो पार्ट्स में, अगर वो प्रॉपर्टी भी डिवाइड हो जाए तो समझ लेना वो एक्सटेंसिव है, अगर ना डिवाइड हो तो नहीं हो पाएगी। जैसे सपोज टू बी आपका एक रूम है, इस रूम में 100 किलो पास्कल प्रेशर है सपोज टू बी, राइट? आपने रूम को डिवाइड कर दिया, एक रूम के दो रूम कर दिए, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 50-50 हो जाएगा, नहीं 100-100 ही रहेगा। So that's why I say that should be what, my dear, intensive. वही आप बात करें, एक लकड़ी है, लकड़ी, wood, suppose to be you have wood, right? ये wood है कोई, and you have cut this wood into, right, two parts. So what will happen, my dear? Suppose to be initially इसका अगर 700 kg per meter cube था, what density?
सो माय डियर राइट नाउ ये क्या 350 हो जाएगा? नहीं, इट शुड बी 700 राइट नाउ. सो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट माय डियर इंटेंसिव. इट्स अ बेसिक फंडा that you should keep any property inside the box and you divide that box into two parts, and supposed to be the property has been divided, so it should be extensive, otherwise it is intensive, right? And one more note is there, my dear, that is any extensive property per unit mass in specific property and it is intensive in nature. कोई भी आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ले ले, अगर उसको आप पर यूनिट मास दिखा रहे हैं, so it should be specific properties, and my dear these specific properties are nothing but intensive in nature. वो पूरी पूरी क्या कहलाएंगी? इंटेंसिव कहलाएंगी. ओके, सो बच्चा पार्टी, आई होप इट्स क्लियर टू यू. वो क्या कहलाएंगी? इंटेंसिव कहला देंगी पूरी की पूरी. ओके, जैसे कि अब आपने सपोज ले स्पेसिफिक वॉल्यूम ले लिया, तो वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव पर यूनिट मास, दैट इज व्हाट माय डियर, इट इज बिकम स्पेसिफिक वॉल्यूम. स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंटेंसिव. एंथैल्पी ले लीजिए, स्पेसिफिक एंथैल्पी दैट इज व्हाट? एंथैल्पी पर यूनिट मास. सो माय डियर क्या होगा ये? स्पेसिफिक एंथैल्पी. ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटेंसिव. ओके बच्चा, आई होप इट्स क्लियर टू यू. अभी बहुत बेसिक बेसिक चल रहा है, एकदम बेसिक से लेके जा रहे हैं, पूरा ऊपर तक लेके जाएंगे, डोंट वरी. हियर आई हैव गिवन, मैंने वही एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे, बताया है आपको एग्जांपल लेके, दैट यू कैन सी ओवर हियर. वही चीज जो मैंने बताई है. नाउ प्रोसेस, व्हाट इज प्रोसेस? नाउ प्रोसेस को कैसे डिफाइन करेंगे? या कंटिन्यूअस चेंज इन स्टेट होगा, इज कॉल्ड व्हाट? प्रोसेस. कोई भी सिस्टम है, सपोज टू बी, मेरे को बताओ, अगर आप कोई भी चीज है, आप अब केजी में एडमिशन लेते हैं, नर्सरी में एडमिशन लेते हैं, नर्सरी में एडमिशन लेंगे आप, राइट? किसमें? नर्सरी में. और आप सीधे सीधे क्या कर रहे हैं? बीटेक कर रहे हैं या बीई कर रहे हैं, राइट? एंड बीई बीटेक करके सपोज टू बी आप क्या कर रहे हैं? आप सीधे सीधे मान लीजिए आप इंजीनियर बन जा रहे हैं, राइट? इंजीनियर इन अ गवर्नमेंट सेक्टर. सो माय डियर, नर्सरी करा, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए, सेकंड केजी में आए, फर्स्ट में आए, सेकंड में आए, थर्ड में आए. सो क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना आपकी जर्नी में. आप पहले साल में नर्सरी में थे, फिर आप केजीज में आए, केजीज को पार करके फिर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए, फिर सेकंड में आए, थर्ड में आए. सो ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ इनफाइनाइट स्टेट्स पॉइंट्स आ रहे हैं, राइट? सो वही मैं बोल रहा हूं कि दैट इज नथिंग बट अ प्रोसेस. सो माय डियर, कंटिन्यूअस चेंज इन अ स्टेट इज कॉल्ड व्हाट माय डियर? प्रोसेस. सो कंटिन्यूअसली चेंज होगा, दैट इज व्हाट माय डियर? प्रोसेस. ओके, सो आफ्टर ज्वाइनिंग द नंबर ऑफ स्टेट्स, मैंने बोला ना, अगर आप फिर आपको सबको ज्वाइन करना पड़ेगा. आफ्टर ज्वाइनिंग द नंबर्स ऑफ स्टेट which occur between initial and final state, we get the process path, right? अब suppose to be, अब आप यहाँ नर्सरी से आप बीटेक होल्ड कर रहे हैं, so definitely आप कहाँ से क्या आए हैं, right? So whatever the path, that path will be what, my dear? ये जो process path होगी, ये क्या होगा? ये जो number of infinite states आए हैं, इनको अगर आप ज्वाइन करेंगे, so definitely you'll get what, my dear? Process path. तो वही चीज यहाँ पे दिखाई गई है, that is state of different points. You can see over here in the diagram, right? बच्चा पार्टी, if you have anybody doubt then please let me know and be fast. बच्चा पार्टी, be fast. okay? कोई भी डाउट आएगा, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, हर एक चीज लेके चलूंगा. ऐसा नहीं है कि गेट में तो सिर्फ फार्मूला करा दूं, न्यूमेरिकल करा दूं, निकल लूं. नहीं, पूरे कराऊंगा, डेप्थ से कराऊंगा, डोंट वरी. अब मैं वही बता रहा हूं कि अब बेसिक रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल ओनली व्हेन, दो कंडीशन होनी चाहिए. पहला कि जिस पाथ से जाए उसी पाथ से वापस आ जाए. जैसे सपोज टू बी ऐसा, ठीक है, आप गए अब्रॉड, आप गए लंदन, ठीक है, आप गए इंडिया से लंदन, ठीक है, इंडिया से आप लंदन गए, मेरी बात समझना अभी ध्यान से. इंडिया से आप लंदन गए, लंदन से आप आए, मतलब जो फ्लाइट पाथ था पहले का, सपोज टू बी अगर वया दुबई गए हैं आप, तो वया दुबई ही जाए, वापस भी आप वया दुबई ही आएंगे, ठीक है. सो ठीक है, दूसरी बात है, आप यहां से गए तो एकदम देसी आदमी, राइट? देसी आदमी, एकदम संस्कारी. पता चला लंदन से आप वापस आए, तो अगर आप एज इट इज देसी आदमी हैं, आप में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, और आप सपोज टू बी लंदन में गए, तो आपको सब चीजें एकदम भौतिक सुख जो बोलते हैं, फिजिकल नो काइंड ऑफ फैसिलिटीज, लाइक आपको हर एक चीज मिल रही है, जगह पे वेटर्स हैं, ये है, बहुत ऐशो आराम में रह रहे हैं. बट जब आप गांव में आएंगे, तो गांव में ये सब चीजें नहीं मिलेंगी आपको, लाइट नहीं मिल सकती, कुछ इश्यूज होंगे. सो माय डियर, वहां पे क्या होगा? अगर उन चीज मतलब सराउंडिंग पे आप जिस रहे, सराउंडिंग से आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़े और सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट ना पड़े, सो माय डियर आप देसी के देसी रह जाएं, दैट मींस आपकी कोई प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई, आप वैसे ही संस्कारी थे जैसे पहले थे देश में. सो माय डियर, ये जो प्रोसेस हुई आपकी जाने की और आने की, एक वही पाथ से, वो क्या हुई? रिवर्सिबल. तो सेम चीज यहाँ बोली जा रही है, यही चीज बोली जा रही है यहाँ पे. इट कैन बी रिवर्स इन सच मैनर दैट इट फॉलोज द सेम पाथ एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग रिटर्न्स बैक देयर इनिशियल स्टेट. मैंने बोला आप गए इंडिया से लंदन, लंदन से वापस आ गए इंडिया, एक पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. दूसरी देखते हैं,
एट ईच एंड एवरी इक्विलिब्रियम पॉइंट प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। और मैंने आपको बोला ना कि आप अपने संस्कार नहीं छोड़ रहे, राइट ना। सो आपके हर एक पॉइंट पे, आप यहाँ पे भी थे, आप दुबई में भी थे तो अभी आपके संस्कार सेम थे, आप लंदन गए वहां पे भी संस्कार वही रहे, फिर लंदन से वापस आए वहां पे भी आपके संस्कार वही रहे, आप बदले नहीं। वही बोल रहा हूँ कि जो इंसान बदले ना, वही क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस ना तो थर्मोडायनामिक में एग्जिस्ट होती है, और आदमी एक बार लंदन चला जाए तो बदल के ही आता है, चेंज वैसे का वैसा नहीं रहता, राइट ना। तो दोनों चीजें नहीं मिलती हैं। इट्स अ हाइपोथेटिकल और वी कैन से आइडियल कंसेप्ट, राइट बच्चा। बट अगर ऐसा हो जाए तो देखिए दुनिया भी बदल जाए, राइट ना, और जग में काफी कुछ अच्छा हो जाए। बट और वैसे ही अगर ये प्रोसेस हो जाए थर्मोडायनामिक्स में तो इफिशिएंसी हमें काफी ज्यादा मिलेगी फिर, राइट। बट ऐसा होता नहीं है, अदरवाइज द प्रोसेस इज स्ट्रेट टू बी इरिवर्सिबल। और अगर ऐसा ना हो तो प्रोसेस क्या होगी, इरिवर्सिबल। ओके बच्चा पार्टी, आई होप यू गॉट इट माय डियर। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट, चलते हैं आगे। अब एक बात होती है क्वाजीस्टैटिक। क्वाजी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, ये बात याद रखेंगे। क्वाजी का मतलब होता है ऑलमोस्ट। रेस्ट का मतलब, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब होता है बच्चा रेस्ट। क्या होता है मतलब, रेस्ट। ओके सो माय डियर, क्वाजी स्टैटिक मतलब ऑलमोस्ट रेस्ट। ओके quasi means almost, static means rest. Process is called as quasi static if it takes place infinitely slowly, otherwise non quasi static। एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसके ऊपर आपने वेट रखा हुआ है, वेट रखा हुआ है, राइट। ये वेट रखा हुआ है। अब इस वेट को आपने उठाया, डेफिनेटली ये पिस्टन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तुरंत ट्रैवल कर जाएगा जैसे ही आप वेट निकालेंगे बाहर, राइट ना। बट अगर मैं इस वेट को चॉप कर दूं, चॉप बहुत बड़े छोटे छोटे पीसेस में, तो क्या होगा बच्चा, आप एक पीस उठाएंगे, पिस्टन थोड़ा सा मूव करेगा, दूसरा उठाएंगे, थोड़ा सा मूव करेगा, तीसरा उठाएंगे, लाइक सी, मतलब आप एक एक पीस उठाएंगे, डेफिनेटली पिस्टन धीरे धीरे मूव होगा, बट इफ यू फील लाइक कि पिस्टन जगह पे ही है, इट इज नॉट मूविंग। So that kind of a process nothing but what, my dear, quasi-static. And I want to tell you, quasi-static, it's very important word, is almost a reversible. It's not exactly reversible, it is almost reversible process, but not exactly नहीं होती। And I want to tell you one more thing, that quasi-static compression and expansion can be treated as reversible process. And one more thing that I want to add, my dear, every reversible process may every reversible process may be quasi-static, but every quasi-static is not reversible. What I mean to say, कि कोई भी reversible है, कोई भी whatever the reversible process we have, that can be quasi-static, but every quasi-static is not a reversible. Okay, बच्चा पार्टी ये दिमाग में रखना। Okay, here I go for next, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की आवश्यकता क्यों पड़ गई, हमने सॉम में देखा था, सॉम strength of material. My dear, when we do the analysis of any particular joint or any kind of object, so at that time we have taken the assumption in strength of material starting में, beginning में हम देख लेते हैं कि that we assume the there should be no unbalanced force within the system, that is nothing but the system should be in equilibrium, जिसका हम analysis कर रहे होंगे। So same thing, if you want to do the analysis of a particular system, then my dear, first of all, the first thing that you have to make sure कि वो सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम इज अ डिफरेंट थिंग, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इज अ डिफरेंट थिंग। आई रिपीट, थर्मल अलग चीज होती है, उसमें सिर्फ इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर्स की बात होती है, बट थर्मोडायनामिक में 5-5, 6-6 इक्विलिब्रियम्स की बात होती है। ओके सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके देखिए मैंने बोला था ना, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है बेटा, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर्स, टेम्परेचर्स की इक्वालिटी, दैट इज दो सिस्टम है, थर्मल इक्विलिब्रियम में बोल दिया मतलब उन दोनों के टेम्परेचर सेम है, राइट। अगर कोई भी दो सिस्टम है उनके, अगर मैं बोल दूं थर्मल इक्विलिब्रियम है तो उनके टेम्परेचर सेम, राइट। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स विद इन द सिस्टम, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा होगा सिस्टम में। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल रिएक्शन पोटेंशियल शुड बी एब्सेंट विद इन द सिस्टम, मतलब कि जिसके कारण सिस्टम के अंदर इनिशिएशन होगा केमिकल रिएक्शन का, वो जो केमिकल रिएक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, नील, जीरो, और वी कैन से एब्सेंट, राइट। एंड माय डियर, फेज इक्विलिब्रियम में क्या होगा, मास ऑफ ईच फेज रिमेन्स सेम with respect to time. Supposed to be कोई सिस्टम है, supposed to be there is a system, right, and ये supposed to be, या इतने में क्या है, लिक्विड है, और इतने में क्या है, गैस है, राइट है, इतने में लिक्विड है, and supposed to be it is 10 लीटर, right, and गैस का वेट है supposed to be 20 kg. So after some time it should remain same, ये चेंज नहीं होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरा का पूरा 10 लीटर रहेगा लिक्विड, एंड गैस कितना रहेगा बच्चा, 20. So then and only we can say अगर ऐसा है, so that system is what, my dear, in phase equilibrium. There is another, ये किसी यही एग्जाम में पूछा था, so I have added it, that is electrostatic equilibrium.
नो अनबैलेंस चार्ज विद इन द सिस्टम, अगर कोई अनबैलेंस चार्ज नहीं है सिस्टम के पास, सो दैट वी कैन से दैट सिस्टम इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अगर सिस्टम ये पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, दैट इज 1 2 3 4 5, ये पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, सो वी कैन से दैट पर्टिकुलर सिस्टम माय डियर इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। दैट मींस कहने का मतलब क्या है कि बिफोर डूइंग एनालिसिस ऑफ एनी सिस्टम, the system is in a thermal equilibrium, it should be in mechanical equilibrium, chemical equilibrium, electrostatic equilibrium and my dear phase equilibrium, right? पांच equilibrium condition satisfy करेगा, then and only that system will be what, my dear, in thermodynamic equilibrium, right? अच्छा बच्चा पार्टी, I hope everybody got it. Now my dear, I'll go for the next. चलें आगे. If the system follows above mentioned equilibrium, then the system is thermodynamic equilibrium. मैंने पहले ही बताया, right? Now my dear, we'll talk about the pure substance. If the substance is homogeneous in chemical composition throughout the system, then it is called a pure substance. वो क्या होगा, अगर उसका chemical composition same है throughout and it is a single component system, it is a single component system. Example, water plus water vapor, ethyl alcohol plus water, that is what, my dear, that are nothing but what, बच्चा, that are nothing but pure substance. But my dear, when I talk about liquid air plus gaseous air, is not a pure substance. Mixture of refrigerant that behaves as a pure substance is what, azeotrophs. Azeotrophs refrigerant उसको बोला जाता है कि जो अगर mixture of refrigerant हमने mix किया है and that will behave like what, pure substance, so that is known as azeotrophs. And my dear, remember, liquid air plus gaseous air is not going to be pure substance, because when you're going to liquefy the gaseous air, so my dear, you will find, because different gases will liquefy at different temperatures, so definitely the mass of each gas will be different. So that's why I said it is not a pure substance. Okay, बच्चा पार्टी समझ आ रही है बात? I hope everybody got it. Now my dear, we'll go for next. Now we have decided, my dear, Gibbs phase rule. Gibbs phase rule की बात करें, in that, my dear, we are getting P plus F is equal to C plus N, and N is equal to 1, that is temperature for material science. Material science में इसकी वैल्यू क्या होगी, N की 1. Okay, and यहाँ पे N क्या होता है, नॉन कंपोजिशनल वेरिएबल बोलते हैं इसको. So non compositional variable जो होता है material science में we are only taking what, my dear, the rule is same, the only thing that is non compositional variable will only one, and that is temperature. But my dear, and it is also known as what, my dear, modified Gibbs phase rule. और n is equal to 2 होता है किसमें, thermodynamics में. उसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, temperature and pressure, right? P is what, my dear, number of phases, F is nothing but degree of freedom, right? Or we can say the number of minimum independent variables required to fix the state of a system, right? वही चीज लिखी हुई यहाँ पे. And C is nothing but number of component, okay? And my dear, triple point of water has 0 degree of freedom. उसमें degree of freedom क्या होती है, triple point of water की, that is F is equal to 0. F is equal to 0. Okay, I hope you got it. Now my dear, we'll talk about zeroth law of thermodynamics. It's very simple, आप सब जानते हैं, but still I want to revise. मैं रिवाइज करा देता हूं आपको. If a system A and B are in separately in thermal equilibrium, अगर दोनों एक दूसरे के साथ में thermal equilibrium में है, with system C, A और B अगर C के साथ में thermal equilibrium में है, so definitely वो तीनों एक दूसरे के साथ में thermal equilibrium में रहेंगे ही रहेंगे, and that is nothing but what, my dear, ABC. And this first law, this zeroth law has been discovered after the first and second law of thermodynamics. First और second law आने के बाद discovered हुआ, right? And that means what, TA is equal to TB is equal to TC, right, बच्चा पार्टी? I hope you got it. Okay, so my dear, I'll go ahead now और आगे चलते हैं. Conclusion of zeroth law. Zeroth law ने ये तो बता दिया कि अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तीसरे के साथ में तो डेफिनेटली each of them will be in thermal इक्विलिब्रियम में होंगे, डेफिनेटली, मतलब टेम्परेचर उनके सेम होंगे. बट नाउ उससे कंक्लूजन क्या क्या निकले, दैट आई वांट टू लेट यू नो, माय डियर. सी हियर, प्रोवाइड द बेसिक. इसने क्या करा था, फर्स्ट वन, दैट इज इट प्रोवाइड द बेसिक्स फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, ठीक है. दूसरा, इट डज नॉट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर. इट टेल्स कि हाँ थर्मल डेफिनेटली देयर शुड बी ना इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, बट इट डज नॉट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर की हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर से लोअर होगा कि लोअर से हायर होगा. माय डियर, देयर इज अ चांस कि यहां से एमएसक्यू क्वेश्चन बन सकता है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं. सो रिगार्डिंग दैट आई हैव गिवन दिस स्टेटमेंट. थर्ड वन, दैट इज इट गिव्स द कांसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम. इसने कांसेप्ट दिया था किसका, थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, थर्मामीटर, और इसका एग्जांपल क्या है, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ दिस zeroth law, आई विल टेल यू माय डियर. Thermometer used by doctor for human body temperature measurement is a perfect application of zeroth law. इसका perfect application है. My dear, कैसे?
ये मान लीजिए आपका ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, राइट। ये क्या हो गया बच्चा, सी। सो डेफिनेटली क्या होगा, ह्यूमन बॉडी का टच में आई किसके, टिप ऑफ थर्मोमीटर, ये जो टिप ऑफ थर्मोमीटर दिख रहा है, राइट, इसके टच में आई ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी इसके टच में आई तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, जो टिप ऑफ थर्मोमीटर में टेम्परेचर आएगा, सो डेफिनेटली वो क्या होगा, जब पारा होगा, दैट इज Hg, मर्करी होगा, दैट इज गोइंग टू बी फ्लक्चुएट, वो फ्लक्चुएट होगा, राइट। तो वो फ्लक्चुएट जब होगा, सो डेफिनेटली क्या होगा, इट विल शो सम रीडिंग, राइट ना। सो इनडायरेक्टली क्या होगा, यहां से दिस हैज बीन केम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद दिस, इसके साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में आया ये, राइट, एंड ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, सो डेफिनेटली ए एंड बी क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, डेफिनेटली। सो दैट्स व्हाई there is a measurement of temperature by the thermometer, that is nothing but what, my dear, perfect example of zeroth law of thermodynamics. Okay बच्चा पार्टी, is it clear now? Okay, अगर clear है तो बताते चलेंगे बच्चा जोर जोर से, ठीक है। So here we go for next. Now my dear, here the human body and tip thermometer and thermal equilibrium with the mercury of the thermometer. Okay, now we have, my dear, discussion about work and heat. So my dear, both are क्या है, path function, depend on past history, they are inexact differential and they are boundary phenomena. याद रखिएगा, दोनों बाउंड्री फिनोमिना है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, पाथ फंक्शन है और पास्ट हिस्ट्री में डिपेंड करेंगे। ओके, देयर इज नथिंग टू रिमेंबर, ये आसानी से सबको पता है, राइट। एंड माय डियर, ये तो साइन कन्वेंशन थे जो हमने लिए थे, नेगेटिव पॉजिटिव, वर्क इनपुट नेगेटिव लिया था, वर्क आउटपुट पॉजिटिव लिया था, वर्क दैट इज हीट रिजेक्टेड नेगेटिव एंड हीट इनपुट व्हाट, सॉरी ये यहाँ पे अपोजिट हो गया, दैट इज वी हैव सी हीट रिजेक्टेड वी हैव टेकन नेगेटिव, यहाँ पे ये होना चाहिए था, ये इनपुट होना चाहिए था, ये इनपुट होना चाहिए था और ये आउटपुट होना चाहिए था, राइट। आउटपुट मींस रिजेक्टेड, अगर हीट रिजेक्ट कर रहा है सिस्टम तो डेफिनेटली इट शुड बी नेगेटिव। ओके, हियर आई गो बच्चा पार्टी, चलें आगे, वेट अ मिनट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्मोमीटर्स। अब थर्मोमीटर्स के बारे में बात करेंगे, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। थर्मोमीटर्स जो देते हैं, थर्मोमीटर्स में पूछेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा, तो पूछेगा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, राइट। सो माय डियर, थर्मिस्टर और रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जिस किस पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है, किस पे काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, इफ यू गो थ्रू द वीडियो दैट इज अवेलेबल इन द यूट्यूब चैनल इटसेल्फ, सो माय डियर, उस पे मैंने बताया था दैट इट्स वर्क ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज। एंड माय डियर, वी आर कम टू नो द अबाउट टेम्परेचर बाय द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस, सो डेफिनेटली यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस। ये आपको याद रखना है कि थर्मिस्टर में या रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में रेजिस्टेंस itself is work like a thermometric property. Why it is thermometric property is nothing but by the help of that or related to that particular property we are getting temperature, right? बात करें थर्मोकपल पे, so I already told you that it works on the Seebeck effect. किस पे काम करेगी, Seebeck effect पे। And my dear, EMF is thermometric property. क्या होती है यहाँ पे, जब टू डिफरेंट डिसिमिलर मेटल्स को आप ज्वाइन करते हैं, राइट, and you keep that particular junctions at different temperatures, so वो क्या करता है, वो EMF generate करता है, and that EMF is directly proportional to what, my dear, difference between the temperature that you have keep, जो आप डिफरेंस रखोगे ना, सपोज टू बी आपने दो डिफरेंट मेटल है, राइट, इनको ज्वाइन कर दिया, एक A है, ये मटेरियल A हो गया, ये मटेरियल B हो गया, सो डेफिनेटली अगर ये दो जंक्शन है, इनके बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करोगे, सो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, EMF जनरेट करेगा, एंड दिस EMF सपोज टू बी ये T1 है और ये T2 है, so definitely this T1 minus T2 is directly going to be proportional to what, my dear, EMF. It is Seebeck effect. Okay बच्चा, constant volume gas thermometer। अब जब constant volume gas thermometer रहेगा, volume अगर constant है, so obvious सी बात है, PV is equal to RT होता है, right? So अगर volume constant है, so definitely pressure is directly proportional to temperature. So pressure is going to be what, my dear? Corresponding pressure पे we are getting temperature. So that's why in constant volume gas thermometer, pressure will work as what, my dear? Thermometric property। बात करें कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर की, सो इन दैट माय डियर वी आर गेटिंग व्हाट, वॉल्यूम। क्या बात करेंगे, वॉल्यूम इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, राइट, बिकॉज़ प्रेशर इज कांस्टेंट, सो डेफिनेटली वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, टेक्स्ट बुक पॉइंट, माय डियर, बोथ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस एंड प्रेशर गैस थर्मोमीटर आर व्हाट, माय डियर, दे आर आइडियल गैस थर्मोमीटर्स। क्या है वो, आइडियल गैस थर्मोमीटर, बिकॉज़ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन they are independent, because material of construction is independent, they are independent of what, my dear, material of construction, right? Ideal gas thermometer are independent of material of construction. It means that if the gas is ideal gas, then it does not matter which gas it is। अगर आपसे बोल दिया
कि हाँ ये आइडियल गैस है, तो मैटर नहीं करेगा कि वो गैस नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि कार्बन है कि क्या है। ओके बच्चा पार्टी, वेरी गुड मॉर्निंग रजनीश। सो माय डियर, आई होप यू गॉट इट नाउ। ये कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे, थोड़ा सा फास्ट चल रहा है बिकॉज इट्स अ रिवीजन। एंड माय डियर, टेम्परेचर स्केल की बात करें तो 1954 था। 1954 के पहले हमारे पास 2 रेफरेंस पॉइंट स्केल हुआ करती थी, एक और 2 रेफरेंस पॉइंट। वो रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ करते थे? आइस पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट हुआ करता था, और स्टीमिंग पॉइंट दैट इज बॉइलिंग पॉइंट हुआ करता था। बट 1954 के बाद में केल्विन ने जुगाड़ लगाया। केल्विन ने क्या जुगाड़ लगाया? देखो ये मैं बता रहा हूं पहले वाली। अगर आप स्टीमिंग पॉइंट पहले अगर सपोज टू बी डिग्री सेल्सियस में है, यहाँ पे वेट, ये डिग्री सेल्सियस में देख रहे हैं, ये फ़ारेनहाइट में देख रहे हैं। सो माय डियर, क्या करते थे हम लोग जब बिफोर 1954, जो भी बता रहा हूं इट इज बिफोर 1954, हम लोग क्या लेते थे? करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, सॉरी स्केल, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 0, बाद में फिर बॉइलिंग पॉइंट और स्टीमिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, और वी कैन से फ्रीजिंग पॉइंट हियर, सेम थिंग। एंड माय डियर, वी आर गेटिंग दिस एक्सप्रेशंस, राइट? बट आफ्टर 1954 माय डियर, आफ्टर 1954 क्या हुआ कि केल्विन जी ने जुगाड़ लगाया, एंड ही हैड टेकन व्हाट? सिंगल पॉइंट रेफरेंस स्केल। एंड माय डियर, सिंगल पॉइंट रेफरेंस स्केल जब उन्होंने क्रिएट करी, तो ये जो सिंगल पॉइंट था, ये पॉइंट किसको लिया उन्होंने? रेफरेंस पॉइंट किसको लिया? सो माय डियर, दैट रेफरेंस पॉइंट इज नथिंग बट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या लिया बच्चा? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को लिया। एंड ही कंक्लूडेड दैट 1 केल्विन इज इक्वल टू व्हाट बच्चा? क्या होगा? 1 केल्विन किसके बराबर होगा? 1 केल्विन इज नथिंग बट 1/273.16 पार्ट ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब 1 केल्विन 1/273.16 पार्ट ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, उसके बराबर होगा। सो माय डियर, ही हैव कैलकुलेटेड दिस। तो आपको ये याद रखना है बिकॉज़ समटाइम्स दे आस्क, एंड वी हैव ऑलरेडी नो कि अगर आपको केल्विन है, केल्विन से अगर डिग्री सेंटीग्रेड में टेंपरेचर आपके पास में है, यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, देन यू हैव टू ऐड 273.15, राइट? जैसे कि ट्रिपल पॉइंट वाटर का क्या था? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर होता है, उसमें आप 273.15 ऐड कर देंगे, so you're getting triple point of water, that is 273.16 degree Kelvin. Okay, I hope it's clear. Rajneesh, most welcome dear. So बच्चा पार्टी, मैं बता रहा हूं अभी भी पढ़ लो अच्छे से। वेरी गुड। आपका उस्ताद देख के लग रहा है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। वेट, हाँ जस्ट थोड़ा सा इश्यू है, 2 मिनट, लेट मी। ओके, नाउ इट्स सॉर्टेड है बच्चा। ओके, नाउ इट हैज बीन सॉर्टेड। सो बच्चा पार्टी, ओके, सो ये याद रखना है हमें। ओके, यहां पे सिर्फ यही याद रखना है कि इट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बराबर होता है। ओके, एंड माय डियर, आई वांट टू टेल यू, आगे भी मैंने लिखा होगा कि जो केल्विन स्केल होती है, केल्विन स्केल को ही, जो केल्विन स्केल है, यू नो ऑलवेज आपने देखा होगा कि दैट इन कैरनॉट, मैं बोलूंगा आपको आगे कि दैट यू हैव टू कीप द टेंपरेचर इन केल्विन। व्हाई इट इज सो इन थर्मोडायनामिक्स? बिकॉज़ माय डियर, केल्विन इज गोइंग टू बी नथिंग बट एब्सोल्यूट स्केल। एब्सोल्यूट स्केल बोला जाता है इसको, एंड इट इज व्हाट माय डियर? इट इज थर्मोडायनामिक टेंपरेचर स्केल। इसको थर्मोडायनामिक टेंपरेचर स्केल भी बोला जाता है। सो दैट्स व्हाई माय डियर, वी आर कीपिंग ऑल द टेंपरेचर्स इन डिग्री, सॉरी केल्विन ओनली इन थर्मोडायनामिक्स, राइट? थर्मोडायनामिक स्केल भी बोला जाता है इसको, थर्मोडायनामिक टेंपरेचर स्केल, सॉरी। ओके बच्चा पार्टी, आई होप यू गॉट इट। गुड मॉर्निंग शुभम, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आई रिपीट वंस अगेन कि उसको क्या बोला जाता है? उसको थर्मोडायनामिक टेंपरेचर स्केल बोला जाता है, एंड दैट्स द रीजन वी कीप एवरी टेंपरेचर इन थर्मल साइंस इन केल्विन। केल्विन से करेंगे तो करेक्ट आता है आंसर। अगर आपने डिग्री सेंटीग्रेड से कर दिया तो इश्यू हो जाएगा, वो भी खासकर किसमें हो जाएगा? जब आप कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी निकाल रहे होंगे। अगर वहां पर डिग्री सेंटीग्रेड लिया तो गलत आएगा आंसर। बच्चा पार्टी, इससे बच के रहना, बहुत ही खतरनाक चीज है। ठीक है, देखिए ध्यान से। टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्रेरी एंड रैंडम इन नेचर। बताता हूं इसका मीनिंग क्या है। ये बात, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा बस, क्योंकि ये एमएसक्यू में पूछा जा सकता है। 2 डिफरेंट स्केल्स, दैट इज एग्जांपल क्या, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग समझने की कोशिश करिए स्टेटमेंट से। दैट इज 2 डिफरेंट स्केल्स इफ कैलिब्रेटेड देन दे विल गिव द सेम रीडिंग एट द कैलिब्रेटेड पॉइंट्स ओनली, डज नॉट गारंटी टू शो द रीडिंग इन बिटवीन। माय डियर सुनिए, अब जैसे आपने 2 स्केल ली डिफरेंट, ठीक है, इनको आपने कैलिब्रेट कर दिया, ठीक है, और आपने कैलिब्रेट करा सपोज टू बी ये पॉइंट पे, सपोज टू आप मान लीजिए बीपी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट पे, एंड इसको आपने करा एफपी पे, ठीक है, सपोज टू बी ये आपकी एक्स स्केल है, ये वाई स्केल है, राइट? आपने कैलिब्रेट कर दिया, एंड कैलिब्रेट कहां करा? बॉइलिंग पॉइंट पे और फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो अगर दोनों पे कैलिब्रेट कर दिया तो ठीक है, यहां पे जो अगर सपोज टू बी यहां पे एक्स स्केल अगर सपोज टू बी 200 शो करेगी तो डेफिनेटली वाई स्केल भी 200 शो करेगी। इसका मीनिंग समझिए, एफपी अगर 100 शो करेगी तो डेफिनेटली ये भी 100 शो करेगी। मतलब यहां पे कोई डिफरेंस नहीं होगा रीडिंग में। बट माय डियर,
ये जो इन बिटवीन वाला रीजन है, इन बिटवीन वाला ये जो रीजन है, नंबर ऑफ वो होंगे, ये जो इन बिटवीन वाला रीजन है, यहां पे दिक्कत हो सकती है। अगर सपोज टू बी, मान लीजिए ये यहाँ पे अगर 100, यहाँ पे समझ लीजिए आप शो कर रहा है 150, तो हो सकता है ये 150 ना शो करे, ये 100 ही शो करे, या मान लीजिए 160 या 165 शो कर दे, राइट? ओके ना, ये डिफरेंस आएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट इट इज, दैट वी सेड दैट टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्ररी एंड रैंडम इन नेचर। ओके बच्चा पार्टी, आई होप समझ में आ गई होगी चीज, इसका मतलब क्या था। ओके शुभम, एवरीबॉडी, राजनीश हियर बच्चा, आई गो। चलो आगे चलें। ओके, तो माय डियर, नाउ इट्स व्हाट बेसिक पार्ट वी हैव फिनिश्ड, नाउ वी विल डिसाइड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे। ओके बच्चा पार्टी, सी हियर। अब अगर बात करूं बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर क्लोज सिस्टम। माय डियर, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, नथिंग बट बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ना तो एनर्जी को बना सकते हो, ना एनर्जी को नष्ट कर सकते हो, ना ही उसका निर्माण हो सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जा सकता है, यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इंग्लिश में बोल दूं, दैट इज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर यूजफुल फॉर्म। यूजफुल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। सो माय डियर, आपको बता दूं कि जब आप साइकिल में लगाएंगे, कोई साइक्लिक प्रोसेस होगी, तो साइक्लिक में लगाएंगे तो क्या होगा, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ माय डियर dq इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल w। ओके, ये होगा साइकिल के लिए, ये किसके लिए, साइक्लिक के लिए, साइकिल के लिए, ठीक है। अगर कोई साइकिल है, आपको साइकिल और प्रोसेस में अंतर क्या होता है, प्रोसेस में जो फाइनल पॉइंट होता है अलग होता है, लेकिन अगर प्रोसेस में, अगर वही प्रोसेस का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो वो साइकिल बन जाती है। बात समझिए, ये हो गई 1 से 2 गए आप, इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग अलग है, ये क्या है, प्रोसेस है। बट अगर साइकिल बनाना है माय डियर, सपोज टू बी यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां, यहां से यहां आ गए, तो ये क्या बन गई, साइकिल बन गई। और जो साइकिल होगी, साइकिल नंबर ऑफ प्रोसेस से बनती है, प्रोसेस नंबर ऑफ साइकिल से नहीं बनती, साइकिल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से बनती है। उस साइकिल में नंबर ऑफ प्रोसेसेस रह सकती हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, बेसिक कंसेप्ट है। जनरल इक्वेशन फॉर क्लोज सिस्टम, अब क्लोज सिस्टम की बात नहीं, मैं आपको बता दूं कि जनरल इक्वेशन जो होगा वो इस फॉर्म में होगा, दैट इज du प्लस, सॉरी, इट इज de प्लस dw। ये जो सिंबल दिख रहा है, ये ऐसे है, इसका मतलब है कि ये पाथ फंक्शन है। ओके, सो ये होता है, एंड आई वांट टू टेल यू कि ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये एप्लीकेबल है रिवर्सिबल के लिए, ये एप्लीकेबल है इरिवर्सिबल के लिए, ये एप्लीकेबल है ओपन के लिए, ये एप्लीकेबल है क्लोज के लिए, दोनों सिस्टम के लिए, दोनों प्रोसेसर्स के लिए। ओके, ये नहीं कि रिवर्सिबल के एप्लीकेबल है, इरिवर्सिबल के लिए नहीं है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ओपन क्लोज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ओके माय डियर, ये हो गया आपका जनरल इक्वेशन, राइट। अब बात क्या हुई, एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो मैंने आपको बताया U प्लस के पी, राइट, ये सब होती हैं चीजें, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। नाउ माय डियर, इज एप्लीकेबल व्हेन, ये कब एप्लीकेबल होगा, du प्लस pdv क्लोज सिस्टम के लिए, कि सिस्टम क्या हो, क्लोज हो, और अदर फॉर्म ऑफ वर्क क्या हो, जीरो हो, राइट। प्रोसेस क्या हो, रिवर्सिबल हो। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी इज निग्लेक्टेड, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों निग्लेक्ट कर देंगे, दैट इज के जो होगा वो निग्लेक्ट कर देंगे, राइट ना। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, क्लोज सिस्टम है, सो डेफिनेटली वो जीरो हो जाती है, चेंजेस उसमें जीरो हो जाते हैं। अब इससे क्या कंक्लूजन निकाले थे आपने फर्स्ट क्लास से, फर्स्ट क्लास से कंक्लूजन क्या निकले थे, देखिए, हीट क्या होगी, पाथ फंक्शन, हीट क्या हो गई, पाथ फंक्शन। एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी क्या होगी, प्रॉपर्टी कहलाएगी। एंड फॉर आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या रहेगी, एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, सो ये तीन थे, और एक है आगे बताता हूं, बात याद रखिएगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मैंने पहले ही बताया था कि ना तो एनर्जी अंदर जाएगी ना बाहर आएगी, मास का भी वैसे होगा, नाइदर एनर्जी नॉर mass can be transferred to or from the system, that is nothing but isolated, and we have seen the example के तौर पे thermoflask ideally possible नहीं है, but almost it behave like that only, right। see here, PMM1, a device producing continuous work without consuming any other form of energy। क्या बोल रहा है, डिवाइस जो प्रोड्यूस करेगा कंटिन्यूअस वर्क विदाउट, PMM1 what means what my dear, perpetual motion mankind of first kind। okay, perpetual motion mankind machine, that is what my dear, of first kind, पहली टाइप का। वो क्या बोलता है, विदाउट इनपुट यू कैन गेटिंग कंटिन्यूअस वर्क आउटपुट, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
yes, without input you can get work output. Without input, what I say, मैं क्या बोल रहा हूँ, if somebody asks you a question कि without input output मिलेगा क्या, तो बोलना हाँ मिलेगा. कब तक मिलेगा? कंटिन्यूअसली नहीं मिलेगा, जब तक इंटरनल एनर्जी है बॉडी के अंदर. सपोज टू बी आज से आपका खाना पानी बंद कर दूं मैं, दाना पानी सब बंद कर दूं आपका, आपको बोलूं काम करना है, आप नहीं करोगे. जब कट्टा दिखाऊंगा आप काम करोगे, आप काम करोगे, लेकिन कब तक काम करोगे? जो आपने आज तक खाना खाया है कल रात में या अभी सुबह में ब्रेकफास्ट किया है, उसकी एनर्जी आपके अंदर, तो डेफिनेटली आप काम करोगे. लेकिन जब इंटरनल एनर्जी खत्म हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर की, आप गिर जाओगे नीचे. सो दैट्स व्हाई से कंटिन्यूअसली पॉसिबल नहीं है, बट पॉसिबल तो है, राइट. सो उसको डिनाई किया उसने, इट वायलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो डेफिनेटली क्या हुआ, इट इज नॉट पॉसिबल. पीएमएम ये भी बोला गया कि फर्स्ट लॉ के कंक्लूजन में आप एक चीज ऐड कर दीजिएगा कि ये पीएमएम 1 इज नॉट पॉसिबल. जो पीएमएम 1 है वो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये भी बताया गया था इस लॉ में. ओके, एंड वन मोर थिंग माय डियर, जो ये जो फर्स्ट लॉ था, इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट द क्वांटिटी. देखिए यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहा है, यहाँ पे भी क्वांटिटी की बात कर रहा है. सो डेफिनेटली जो फर्स्ट लॉ है उसको कौन सा लॉ बोला गया? क्वांटिटेटिव लॉ. उसको कौन सा लॉ बोला गया बच्चा? क्वांटिटेटिव लॉ. ओके बच्चा, आई होप यू गॉट इट, क्वांटिटेटिव लॉ. ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ आई गो फॉर द नेक्स्ट. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे. नॉन फ्लो वर्क तो पता चल गया, dw इज इक्वल टू नॉन फ्लो वर्क. नॉन फ्लो प्रोसेस में वर्क क्या होगा? pdv. ठीक है, ये भी बताया था. ओके बच्चा पार्टी, हियर आई गो माय डियर फॉर नेक्स्ट वन. अब बात करते हैं पीएमएम 1 तो नॉट पॉसिबल है. राइट नाउ माय डियर, वी हैव अप्लाइड दिस फर्स्ट लॉ टू द ओपन सिस्टम. एंड ओपन सिस्टम में क्या हो रहा था? कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ मास इज देयर. सो डेफिनेटली वो स्टेडी फ्लो था, दैट इज मास इन इज इक्वल टू मास आउट, राइट. सो उसमें हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम लोग जब इक्वेशन लगाते हैं, सो माय डियर वी गेट द डेरिवेशन, दैट इज व्हाट, h1 plus v1 square by 2 plus gz1 del q by del m, s2 is equal to v2 square by 2 plus gz2 del w by del m. ये है काउंट फॉर द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी. सेम हियर, राइट, एट इनलेट एंड आउटलेट, राइट माय डियर. ओके, सो h1 को आपने क्या पुट कर दिया? cpt1 v1 square by 2 mgz1 q mcpt2 mv2 square mgz2 plus w कर दिया, राइट. देयर इज नो इशू इन दैट, राइट बच्चा. सो माय डियर, इफ यू गेट दिस, अगर आपने इसको ऐसा कर दिया, so right now my dear, right now we get this form, ऐसे फॉर्म में मिल जाएगा हमें. and this is what this is steady flow energy equation. इसको क्या बोला गया बच्चा? it is steady flow energy equation. and one more thing that you have to remember, अगर सपोज टू बी आपका एंथैल्पी, अगर सॉरी कैपिटल H, अगर ये आपका किलो जूल पर केजी में है, सो डेफिनेटली ये जो v2 स्क्वायर बाय 2 दिख रहा है, यहाँ आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, राइट ना. 2000 हो जाएगा, यहाँ 1000 हो जाएगा, राइट ना बच्चा पार्टी. यहाँ 1000 हो जाएगा, यहाँ 2000 हो जाएगा, राइट. सो इस चीज को याद रखना है, कीप इन माइंड दिस थिंग इन न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम. ओके, यहाँ पे क्या क्या है वो बताया हुआ है आपको, राइट. ओके, सो हियर आई गो फॉर द नेक्स्ट. अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस में क्या होता है? अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस में माय डियर, सी, rate of energy stored is equal to rate of energy inflow, rate of minus energy outflow. And we go what the unsteady state में equation, that is d by dt for control volume is nothing but change in d by dt, that is mi hi plus kei pei, ये सब मिला था हमें, राइट. in case of steady process the above equation put d by dt equal to 0, राइट. ये सब चीजें हम देख चुके थे. and one more thing that you have to keep in mind, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आपसे चार्जिंग का दे देगा इक्वेशन. एक ऐसी पाइपलाइन रहेगी, वहां से बोलेगा इट द tank has been charged by this pipeline and what is the final temperature after the charging. So my dear, आप क्या लिखेंगे? डायरेक्टली T2 is equal to gamma times of T1, जो इनिशियल टेम्परेचर होगा उसके gamma times of T1 आता है. We have done the derivation of it, right? Okay, I hope you got it बच्चा. but here I go for next. यहाँ पे now we are talking about special cases, right? throttling में थ्रॉटलिंग h1 is equal to h2, मैंने पहले बताया था. थ्रॉटलिंग में व्हाट, इट इज आइसेंथैल्पिक, राइट, आइसेंथैल्पिक, राइट. एंड माय डियर, वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि थ्रॉटलिंग में दैट इज व्हाट माय डियर, हीट कैन बी देयर, राइट, बट इन फ्री एक्सपेंशन देयर इज नो हीट, देयर इज नो वर्क एंड देयर इज नो इंटरनल एनर्जी. दैट इज डिफरेंस बिटवीन द थ्रॉटलिंग एंड थ्रॉटलिंग में. इट इज नॉट मस्ट कि प्रेशर ड्रॉप होगा, सो डेफिनेटली टेंपरेचर ड्रॉप होगा. देयर आर थ्री केसेस. sometimes pressure drop, sometimes temperature drops along with the pressure, sometimes temperature increases, and my dear, sometimes temperature remains constant. So temperature remain constant किसमें होगा?
आइडियल गैसेस के लिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द दैट पर्टिकुलर रियल गैसेस, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड डिक्रीज होगा, एंड इट इज हाईली डिस्क्राइब है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, राइट, एंड इट इज हाईली इरिवर्सिबल, कीप इन माइंड दिस थिंग, ओके. सो माय डियर, नाउ विल डिस्कस अबाउट द सेकंड लॉ. सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे. सो माय डियर, बिफोर डिस्कसिंग ऑन द सेकंड लॉ, आई वांट टू टेल यू फ्यू थिंग्स. वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम चलते हैं व्हाटएवर वी हैव. नाउ माय डियर, एट द एंड जो भी छूटेगा विल डिस्कस. So my dear, second law of thermodynamics, right? We come to now second law of thermodynamics. So my dear, limitation, why there is a necessity of second law of thermodynamics? I have put this statement just because of the MSQ. MSQ में एक क्वेश्चन जितने भी कंक्लूजन मैं करा रहा हूं, maybe there is a chance कि MSQ में पूछ ले. Okay? So guys, you have to keep in mind MSQ में there is a chance that they will ask the same statement. Okay बच्चा? So see here. अब क्या होगा? Limitation of first law of thermodynamics. My dear, क्या होगा इसमें? देखो, does not give idea about direction of energy flow, provides knowledge of any quantity of energy transfer, right? Does not, उसने बताया नहीं कि energy flow किस direction में होगा. Does not predict spontaneity and feasibility of process, means they does not tell about कि इसमें जो process हम करा रहे हैं, they have said कि dq is equal to du plus del w, right? But whether this possible is this process whatever you are talking about, it is पॉसिबल भी है या नहीं, दैट मींस फिजिबिलिटी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया. सो इट इज अनदर लिमिटेशन ऑफ इट. सो दैट्स व्हाई वी देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ अनदर लॉ दैट विल डिस्क्राइब, दैट विल टेल अबाउट दिस थिंग. देन माय डियर, वी हैव डज नॉट गिव आइडिया अबाउट द डिग्री ऑफ रिवर्सिबिलिटी, दैट मींस इट डज नॉट टॉक अबाउट द एंट्रोपी. एंट्रोपी के बारे में उसने बात नहीं की थी कि एनर्जी कितनी खराब होगी, दैट इज इरिवर्सिबिलिटी, मतलब व्हाट, डिग्रेडेशन, राइट माय डियर. उसके बाद नाउ वी कम टू द थर्मल एनर्जी रिजर्व, TER के बारे में बात हुई, दैट इज ए लार्ज बॉडी ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, राइट, ए लार्ज बॉडी ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी. सो उसमें एक सोर्स होता है, उसमें एक सिंक होता है. सो सोर्स में क्या होता है? एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर व्हिच सप्लाइज हीट. एंड माय डियर, लार्ज बॉडी ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी मींस व्हाटएवर द अमाउंट यू कैन विथड्रॉ फ्रॉम इट, टेंपरेचर विल नॉट चेंज, टेंपरेचर विल रिमेन सेम, टेंपरेचर उसका सेम रहेगा. ओके. And my dear, जब सिंक की बात हो रही होगी उसमें से भी वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, बट स्टिल इट्स टेंपरेचर विल रिमेन सेम. देयर इज नो इफेक्ट whether you supply or whether you absorb the heat, temperature will remain same. Okay, okay my dear. now अब इसमें दो लॉ थे सेकंड में, इसमें क्या थे? दो लॉ थे. एक था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, एक क्या था बच्चा? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट था, और एक था बच्चा हमारा कौन सा? क्लॉसियस स्टेटमेंट. एक था हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट, राइट. सो माय डियर, केल्विन प्लैंक्स और क्लॉसियस में, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ओके चरण, टोनी, डेफिनेटली माय डियर, डेफिनेटली यू डोंट वरी चरण. सो चरण, वी हैव, देयर आर टू स्टेटमेंट्स दैट इज इन सेकंड लॉ. फर्स्ट वन इज केल्विन प्लैंक्स, अनदर इज क्लॉसियस, राइट. सो Kelvin said it is not possible to convert an equivalent amount of heat into work from the single thermal reservoir. That means what it says, Kelvin said is supposed to be, you are converting, this is supposed to be, you have device, right, cyclic device, supposed to be you are supplying the heat Q, right, from high temperature, and you are getting W, supposed to be it is any device, supposed to be heat engine cyclic device, and that should be what is equal to Q. It's not possible. ये पॉसिबल नहीं है. दैट इज टोल्ड बाय केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. एंड क्लॉसियस सेड दैट मींस अकॉर्डिंग टू केल्विन व्हाट्स पॉसिबल देन, क्या पॉसिबल होगा? सो माय डियर, सी इन द नेक्स्ट स्लाइड वेयर वी आर, लेट मी चेक. नाउ माय डियर, सी हियर, thermodynamic cycle in which there is net heat transfer. उन्होंने बताया ये पॉसिबल होगा. Here you have rejected some amount of heat. You have to reject some amount of heat, then and only it's possible. Otherwise, it's not possible. You can see it's not possible. Here you have not rejected heat, right? And so that kind of device is nothing but what, my dear? Heat engine, which can take the heat from a high temperature and it can transfer to the heat to the low temperature, right? Now, my dear, I will discuss one concept. If supposed to be any engine is reversible, what is mean by that? I will tell you. It can take it can take heat from the higher temperature, that is thermal energy reservoir, with a
बहुत कम, there is a very small difference between the temperatures, then and only that process is going to be reversible, right? And the same thing is happening, it is going to reject the heat when with a small temperature difference, then and only we can say that engine is what completely reversible, right? Otherwise it is not. Agar ek process reverse, that is heat transfer, that is what supposed to be, it is at very slow, that is very less temperature difference, it happens, right, between source and heat engine, and suppose to the temperature difference between the heat engine and sink is quite high, so definitely this process of heat transfer will not going to be reversible. So my dear, in that case, one process is reversible, another one is irreversible. So in that case, the engine is known as endo-reversible engine. Which engine, bacha? Endo-reversible. Keep in mind, endo-reversible engine. वो क्या कहलाएगा बच्चा? Endo-reversible engine. Okay, bacha party. I hope you got it. That is known as endo-reversible engine. Okay. Here I go for next. And it is nothing but it is given everything. And one more thing that I want to tell you, let me check. Okay, here they have given thermal efficiency of that engine, that is nothing but what, bacha? W net output upon Q heat supplied, that is this much. Okay, so I want to tell you this formula, ये जो formula आपने निकाला है, it is applicable for both reversible as well as it is also applicable for irreversible process, right? But when you are writing like this, eta th is equal to 1 minus T lower divided by T higher, it is nothing but it is applicable only for reversible, only reversible case में. It is only applicable for reversible case, but it is applicable for both reversible as well as irreversible. I hope bacha party it's clear to you. Very good. So now my dear, I'll go for next. So my dear, see the statement we have discussed over here, that is statement of second law of thermodynamics. It is impossible for heat engine to produce net work in a complete cycle if it exchange heat only with a single thermal reservoir. Single reservoir के साथ possible नहीं है. That I already told you. You can see here that is Qt is equal to 0. That means what? Qn is converted into totally into work, right? किस पे convert हो रही है? Work पे. It's not possible. ये possible नहीं है. Okay. And my dear, अगर ऐसा होता, so definitely thermal efficiency क्या हो जाती? 100%. And my dear, that's why it is not possible. Okay, I'll go for next. What is PMM2? PMM2 क्या है? Listen to me. Hypothetical machine which produces net work in a cycle by interacting with only one reservoir. It's not interacting, it is interacting. Okay, bacha? It is interacting with only one reservoir. It is interacting. यहाँ पे interacting है, not interesting. It is interacting with only one reservoir. And it violates the Killing-Payne statement. Right, my dear, what the question they'll say, I'll tell you. They will say statement PMM1 have what, my dear? क्या होगा इसका efficiency? इसका efficiency क्या होगा? It is infinite, right? And my PMM2 का क्या होगा? PMM2 का 100%. ये दोनों possible नहीं है. It's not possible. But you have to tell me, they will frame the question that PMM1 is not possible, has been concluded by first law. PMM2 is not possible, has been concluded by the second law. You have to keep in mind कि कौन सा first law ने बोला था and कौन सा second law ने बोला था. Okay, my dear, I already told you that it is impossible to construct a device which is operating in a cycle will produce no effect other than transfer of heat from lower temperature to higher temperature. My dear, see, कोई भी इसका in simple, just forget about these lines. What I said, please concentrate on that only. Please listen to me, my dear. It is not possible to transfer a heat from low temperature to high temperature without aid of external agency. That means without giving any input, you are not able to transfer the heat which is at low temperature to the high temperature. Means supposed to be, now there is a winter are going on, right? People have what, my dear? Rod heater, water heater होता है ना उनके पास, rod heater. So they put it inside the bucket right now for heating purpose. So what they are supplying? They are supplying the electricity. Then and only that water achieve some kind of temperature which may be 40, 50, whatever. It depends on the need right now. So my dear, without any input, you cannot get transfer of heat from low to high. Okay, I hope you got it.
I hope you got it, bacha party. Very good. Yes, perpetual motion machine. Very good. Here I go for next. You are correct, Charan. So my dear, see, now we'll talk about refrigerators and heat pump. So my dear, if you see the second statement of Clausius, and it is mostly for, ये किसके लिए था exactly? It is exactly for refrigerator and heat pump, right? So how it is related to refrigerator and heat pump? I'll tell you, my dear. See, refrigerator is a device whose purpose to maintain a body at low temperature than surrounding. Surrounding से low temperature पे maintain करना. That is nothing but a function of what, my dear? Refrigerator. Okay. Okay, my dear. So now, a heat pump is the device whose purpose is to maintain a body at higher temperature than surrounding. And heat pump का function क्या होता है? The function of heat pump to maintain the body at a higher temperature from surrounding, and exactly opposite, that is refrigerator. Okay, and my dear, here we are getting COP. We are not going for the efficiency. The reason is what? Now some people ask me question. Sir, in engine you are calculating efficiency, then why you are going for the COP in refrigerator? My dear, it is analogous. COP means coefficient of performance. Sometimes it is also known as what, my dear? EPR, that is energy performance ratio. It is also known as, bacha, energy performance ratio. Now see, it is analogous. Just to differentiate between these two, we use COP. Okay, analogous hai dono. Now the question is, sir, COP, why it is more than 1 point something, it is what more than 1? So my dear, I'll tell you why not. Efficiency is more than 1. See, my dear, when you are talking about heat engine, that is efficiency. So my dear, in heat engine you are converting chemical energy into what? Mechanical. That means what? Here there is you are dealing with conversion. But my dear, in refrigerator or heat pump, और हीट पंप, माय डियर, जो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर होता है, यू आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट, यू आर डीलिंग विथ ट्रांसफर. आप ट्रांसफर भी डील कर रहे हो, तो हियर यू आर ट्रांसफरिंग, आप ट्रांसफर कर रहे होते हो एनर्जी, राइट नाउ, फ्रॉम हाई टू लो और लो टू हाई, राइट? सो दैट्स व्हाई it is more than 1 and it is less than 1, because conversion में there is too many losses. Okay बच्चा, I hope you got it. I hope you got it. Yes or no? Everybody? Okay. So if you got it, then my dear, I'll go ahead. See here. Sorry. Now see here. See here, my dear. देखिए ध्यान से. Now it is your refrigerator. It is your refrigerator. See. What is it? Is taking a heat, that is Q2, from this body TB, and it is what? It is rejecting this heat. That is, it reject what? Q1. Q1 क्या हो जाएगा? This Q1 is equal to what, my dear? It is Q2 plus W as per the law of conservation of energy. So definitely it is going to be rejected at atmosphere, right? And my dear, here the temperature of TB, here TB will be less than from TA. Remember, huh? TB बहुत ज़्यादा कम होगा. Okay, so it is nothing but refrigerator, and here you have to supply the work. And this work is nothing but what, my dear? It should be Q1 minus Q2 as per the law of conservation of energy from this equation. My dear, the same thing. And sometimes the people ask you, sir, what is COP? Oh, sorry. What is COP for refrigerator? Right. So COP of refrigerator, that is desired effect, that is refrigeration effect, divided by W. So what is the refrigeration effect over here? The amount of heat that you remove from the conditioned space, जो भी space से आप जितना amount of heat remove करेंगे, that is nothing but your refrigeration effect. So बच्चा पार्टी, it should be your Q2. क्या होगा ये Q2 होगा and ये W हो जाएगा, and you are going to get this, right? And supposed to be आपसे कभी पूछ ले refrigeration capacity क्या होगी, so simple कुछ नहीं करना, mass flow rate of refrigerant multiplied by the RE कर देना, आपको RC मिल जाएगा, right? I hope you got it. अब RE मिल गया आपको, तो क्या COP को ऐसा नहीं लिख सकता मैं? That is RC, that is refrigeration capacity divided by the power required to run the compressor. Because वो क्या होगा? M into RE हो जाएगा, ये M into mass flow rate into W in हो जाएगा, दोनों गुजर जाएंगे, RE by W in, the same thing will get, right? So remember, confuse के लिए कभी कभी refrigeration capacity दिया रहता है and power दिया रहता है, and they said calculate COP. So it's very easy thing. Okay, so this is all about what, bacha? This is all about the COP. My dear, if I talk about the, पहले इसके बारे में बात कर लें, then we'll talk about the reversible refrigerator and irreversible refrigerator, right? दोनों के बारे में बात करेंगे.
ओके बच्चा पार्टी, सी हियर माय डियर, अगर यहां पे नाउ व्हाट सी, यहां पे हमारा ये कंडीशन स्पेस था, मतलब आप जो टेम्परेचर कम करवा रहे हैं, this is your condition space, means we are interested in this place. Wait, I am interested in this place, मैं इस प्लेस पे इंटरेस्टेड हूं रेफ्रिजरेटर में, राइट. बट माय डियर, व्हेन आई टॉक अबाउट द हीट पंप, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्लेस, इस पे इंटरेस्ट रहूंगा मैं. क्यों, क्या किया आपने, यू हैव टेकन द एटमॉस्फेरिक हीट फ्रॉम एटमॉस्फेयर विच इज डेफिनेटली, बाहर तो ठंडा है, so डेफिनेटली आप उसको लोगे, एंड व्हाट यू विल सप्लाई द वर्क to that particular device, some kind of input or some kind of energy input to this device. So my dear, what will happen, this q1 become energy law of conservation of energy लगाएंगे, energy in is equal to energy out, so energy in is what my dear, q2 plus w, so q1 क्या हो जाएगा बच्चा, q1 is equal to q2 plus w. So that means this much amount of heat that is going to be put inside the condition space, right? So definitely यहाँ पे जब आएगी, so definitely my dear क्या होगी, high temperature होगा. So definitely यहाँ पे COP अगर आप हीट पंप निकालोगे, if you find out COP of heat pump, so that is desired effect या heating effect. यहाँ पे क्या लिखेंगे, heating effect. Heating effect क्या होगा बच्चा, Q1 होगा ना, not Q2, it is Q1 divided by W, right? So Q1 लगा दो आप, divided by W कर दो, so you'll get COP of heat pump, alright? Now my dear, I'm going to tell you about the most important thing. अब बहुत एक important चीज के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा. Wait a minute. So here, now we'll talk about the relationship between these two. इंजन के बारे में, कंप्रेसर के बारे, that हीट पंप के बारे में, and my dear रेफ्रिजरेटर के बारे में. What is the relationship? इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, that I will tell you. Don't worry. RAC में तो बहुत अच्छे से बताऊंगा, बट यहाँ पे भी बता देता हूँ, तो दो टाइम आपका तीन बार, दो बार रिवीजन हो जाएगा, तो there is no issue on that, right? So बच्चा, what is see here? COP that you have already learned कि ऐसा होता है. Q2 आपने देखा है अभी रेफ्रिजरेटर में कि Q2 था, नीचे से ले रहे थे, तो डेफिनेटली Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, राइट माय डियर. ये जो फॉर्मूला है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल. बट अगर आपसे बोले कि COP ऑफ रिवर्सिबल बताओ, COP अगर आपसे ये फॉर्मूला लिखा है रेफ्रिजरेटर, that is TL, low temperature divided by higher temperature minus lower temperature. My dear, this formula is applicable only for reversible refrigerator. Only. You are not allowed to use this formula in irreversible. My dear, COP of heat pump बोले, so definitely it is applicable for reversible. देखें आप यहाँ पे दोनों change हो गए, reversible and irreversible दोनों के लिए applicable है. But my dear, when you talk about COP of heat pump, like this only, high temperature divided by high temperature minus low temperature. So my dear, again I will tell you, this is applicable only for reversible heat pump. ये किसके लिए applicable होगा बच्चा? It is only applicable for reversible heat pump. Okay, my dear, अब एक बात देखिएगा, एंड इफिशियंसी के बारे में मैंने बता ही दिया आपको कि अगर आपको इफिशियंसी बोल रहा है, सी हियर, अगर आप अब देखेंगे, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर इसमें मैं ये काम कर दूं, दैट इज TL अपॉन TH माइनस TL, इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं, व्हाट आई गेट TL प्लस TH माइनस TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL. सो माय डियर, क्या ये गुजर जाएंगे दोनों? This TL will get cancel out. What we are left with? We are left with nothing but TH upon TH minus TL, and that is nothing but COP of what, my dear? Heat pump, right? Right now, my dear, you know that. तो एक बात तो तय हो गई कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है. COP of heat pump nothing but what, my dear? 1 plus COP of refrigerator, right? And you know that efficiency of reversible engine is what, my dear? Reversible engine की क्या थी बच्चा? Anybody? Yes, please tell me. That is nothing but TH minus TL upon TH. राइट अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट TH अपॉन TH माइनस TL, रेसिप्रोकल 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, रिवर्सिबल, सो इट इज व्हाट, माय डियर? अगेन COP ऑफ हीट पंप. सो कैन आई से लाइक दिस, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? वेट, कैन आई से लाइक दिस, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेंट प्लस 1 is equal to
1 upon efficiency of heat engine, of course I can say. So ये रिलेशनशिप याद रखेंगे, you will come definitely आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे इस पे. ओके बच्चा पार्टी, definitely you will get the numerical on this. आपको definitely numerical मिलेंगे बच्चा पार्टी इससे. ओके, everybody listen to me very carefully. Now I'll go for the next. ओके, ध्यान से देखेंगे everything. ओके बच्चा पार्टी, here we go. Now my dear, we'll talk about reversibility and irreversibility. Once these things are over, definitely हम heat पे आएंगे, different work formulas पे आएंगे. You don't worry about it. Okay, see here. Reversibility पे देखते हैं. A reversible process is quasi-static in nature, right? So it is equilibrium with a surrounding at every point during its process. It can be reversed at any without any traces. An irreversible process is spontaneous in nature. It always occurs due to finite gravity. ये irreversible के बारे में बात होगी. Okay बच्चा. Now my dear, we'll go for the next. Causes of irreversibility क्या होता है? Irreversibility किसके कारण आती है प्रेशर में? Okay. So my dear, when the finite temperature gradient or pressure gradient, definitely अगर pressure gradient temperature difference अगर ज्यादा है, तो definitely वहां पे irreversibility होगा. फ्रिक्शन के कारण, फ्री एक्सपेंशन के कारण, that I already told you that free expansion में irreversibility आती है. And mixing, when you mix two fluids, so definitely it should be what my dear, that will cause what my dear, irreversibility. But adiabatic mixing नहीं होता. Okay, chemical reactions, the chemical reactions also causes irreversibility. And my dear, phase change processes like evaporation, condensation, that will be nothing but what? Reversible process. Okay. कैरनॉट साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं, कैरनॉट प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं. दैट इज क्वाइट बेटर, राइट बच्चा पार्टी. ओके, सो माय डियर, सी हियर, ध्यान से देखिएगा. एक कंप्लीटली रिवर्सिबल साइकिल, बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, इट कंसिस्ट ऑफ 4 रिवर्सिबल प्रोसेस. इंटरनली एंड एक्सटर्नली, द कैरनॉट साइकिल इज इंटरनली रिवर्सिबल एज वेल एज एक्सटर्नली रिवर्सिबल. ओके, सो इसमें 4 प्रोसेस होती हैं, आपको पता है. 2 आइसोथर्मल होती हैं, 2 आइसेंट्रोपिक होती हैं. ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है. एक आइसोथर्मल हीट एडिशन होगी, एक आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन होगी, और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, राइट. ऐसा कुछ बनती है टीएस डायग्राम में, फिर रिमेंबर बच्चा पार्टी, राइट. ऐसा कुछ बनती है, am I right ना? टीएस डायग्राम पे, राइट. आई थिंक दिस इज, यू नो दैट 1 2 3 4, राइट. ऐसे घूमता है, राइट ना. ओके, सो हियर ये पीवी डायग्राम पे बनाया है. रेट्स एफिशिएंसी, यू नो दैट कैरनॉट, इसके लिए जो मैंने फार्मूला दिया हुआ है, दैट इज क्वाइट वी हैव ऑलरेडी सीन माय डियर, है ना. इट इज व्हाट? कैरनॉट. ओके, नाउ इसके बारे में, मेन चीज के बारे में बात करते हैं. दैट सीओपी ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, दैट इज आई ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस पॉइंट, राइट. इसके बारे में बात तो हो चुकी है. नाउ माय डियर, विल टॉक अबाउट द एंट्रोपी एंड इरिवर्सिबिलिटी. सो उस अवेलेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, एंट्रोपी एंड अवेलेबिलिटी के बारे में बात करेंगे. ओके बच्चा पार्टी. सो नाउ माय डियर, विल टॉक अबाउट अवेलेबिलिटी एंड एंट्रोपी. बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट फ्यू थिंग्स कि still we are left with the different work expression in a different process as well as the heat transfer, right now. So definitely उनके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग बच्चा पार्टी. Okay, so here my dear, see, entropy is nothing but it represents what my dear? Degradation of energy. क्या represent करती है? Degradation of energy. It represents degradation of energy. And availability is nothing but a maximum available energy that you can get from the system until and unless you achieve that state. That state means what my dear? That means that there should be a thermal equilibrium. Equality आ जाएगा, equilibrium में आ जाएगा system with surrounding. So definitely जब भी equilibrium में आ जाएगा, so definitely there is no interaction between the system and surrounding, and you are not going to get any kind of work, right? So उस स्टेट पे क्या बोलेंगे? उस स्टेट तक आने तक, that is what my dear? Availability. Okay. So before directly going on that classless inequality, my dear, before हम लोग देखेंगे entropy, we'll discuss about the classless inequality. So my dear, classless inequality, what criteria for reversibility of any cycle? Valid for all cycles. Classless inequality is valid for all cycles. Okay बच्चा. So my dear, see, cyclic integration dq by t is less than or equal to 0, right? ये बात ध्यान रखेंगे, ये होता है. बट इक्वालिटी विल बी फॉर रिवर्सिबल साइकिल. dq by t किसके बराबर होगा? साइक्लिक मींस द इंटीग्रेशन हैज बीन अप्लाइड ओवर एंटायर साइकिल. पूरे एंटायर साइकिल में हमने इंटीग्रेशन किया हुआ है, राइट. इट मींस साइक्लिक इंटीग्रेशन मींस, ओके.
It is reversible cycle. My dear, when the cyclic integration of del q by t is less than from 0, that is nothing but what bacha? Irreversible process. And whenever somebody says, okay, cyclic integration of del q by t greater than from 0, that is nothing but what, my dear? That will be impossible cycle. ये तीनों conclusion is very important. So you have to keep in mind, right? And I think you will आपको याद होंगे ही, there is no issue on that, right? बच्चा पार्टी, again I'll go for the next one. So this is the closest inequality, okay? बच्चा पार्टी, see, if I talk about ds के बारे में बात करें, so my dear, I want to tell you ds is nothing but actually dq by t के बराबर होता है, okay, normal. So my dear, when ds is equal to dq by t, then we can say that process is reversible only. But when the when ds is greater than from dq by t, that is nothing but what, my dear? Irreversible process. So my dear, if I want to equalize, अगर मुझे equalize करना है इसको, so my dear, ds for irreversible, I it is what, my dear? dq by t plus entropy generation within system. That is what entropy generated, right now. And I want to tell you, यहाँ इन्होंने बोला है that entropy is a point function, but I want to tell you this entropy is a point function only for reversible process. सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही एंट्रोपी पॉइंट फंक्शन होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में इट इज नॉट गोइंग टू बी अ पॉइंट फंक्शन, बिकॉज for irreversible process ds is nothing but dq by t plus entropy generation, and this entropy generation is not a property, it's not a property, and that's why it is what, my dear? It is a path function. It is what? Path function. Entropy generation is a path function, right? So that's why the entropy in a irreversible process is not going to be a point function. Point function होगा but किसमें? Reversible में, okay? And it is going to be a property of system extensive, right? I hope you got it, बच्चा पार्टी. Okay. I hope आपको समझ में आया होगा. Now my dear, I'll go ahead. चलते हैं आगे. Here. Now my dear, area under TS plot will give heat transfer. मैंने आपको पहले ही बताया था. You know that this basic thing. अभी और बता दूंगा, don't worry. जब TS डायग्राम होता है, supposed to be this is my process. So definitely जो area under TS डायग्राम होगा, that is quite बच्चा. ये क्या होगा आपका? ये आपको देगा heat transfer. ये क्या बताएगा आपको? Heat transfer के बारे में बताएगा. Okay, that is, it is your heat transfer. If you are able to find out the area, definitely you'll get the heat transfer, and that should be equal to the area of that particular diagram. जो diagram होगी इसका area ही बराबर बता होगा उसके. Okay, so बच्चा वाटी, this is for entropy, right? Now my dear, see, if somebody says, okay, I want to please calculate delta S of universe, that is change in entropy of universe. So my dear, definitely क्या होगा? Definitely क्या होगा? डेल्टा एस जो होगा यूनिवर्स का, वो क्या होगा? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ व्हाट, माय डियर? सराउंडिंग, राइट? एंड माय डियर, डेल्टा एस जो यूनिवर्स होगा, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जो होगा, दैट इज क्वाइट व्हाट? जीरो फॉर रिवर्सिबल. चेंज क्या होगा? जीरो होगा. बिकॉज व्हाई इट इज जीरो? बिकॉज रिवर्सिबल है, सो डेफिनेटली उसमें एंट्रोपी जनरेशन जीरो होगा. अगर एंट्रोपी जनरेशन जीरो होगा, सो माय डियर, अगर आपने हीट सप्लाई करी है, सो डेफिनेटली जो अमाउंट ऑफ हीट आपने सप्लाई करी है, सपोज वी हैव सप्लाइड क्यू अमाउंट ऑफ हीट, सो डेफिनेटली इसमें जो एंट्रोपी कुछ ना कुछ पार्ट, बिकॉज हीट इज व्हाट? लो ग्रेड ऑफ एनर्जी, सो डेफिनेटली इसमें लिटिल बिट अमाउंट ऑफ एंट्रोपी होगा. सो डेफिनेटली दैट एंट्रोपी विल रिमेन सेम, उसमें कोई एडिशन नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो एंट्रोपी जनरेशन, एज इट इज व्हाट? एज इट रिवर्सिबल प्रोसेस. सो डेफिनेटली देयर इज नो इंक्रीजमेंट, सो डेफिनेटली चेंज क्या होगा? जीरो. जितना था पहले उतना ही रहेगा बाद में. सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, माय डियर? Reversible. Okay, so delta S is of universe will be zero for reversible process. My dear, entropy change of system. Entropy change of system, what my dear? That is ds of external interaction, ds of internal reversibility, right? I hope you got it, bachcha party. Now here I come. एक्सटर्नल इंटरेक्शन का क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. बट माय डियर, हियर सी, ds जिसके बारे में मैंने बात की थी, del q by t is equal to entropy generation. Just forget about this thing.
इस पे कंसंट्रेशन करो। ओके, नाउ माय डियर विल डिस्कस अबाउट द एंट्रोपी जनरेशन। सो मेरी बात समझिए, एंट्रोपी जनरेशन जीरो होगा किसके लिए? रिवर्सिबल के लिए। एंट्रोपी जनरेशन is going to be what, my dear? It is going to be greater than zero for irreversible. And entropy generation is not going to be less than zero. It is impossible. It is impossible. Okay, the same thing I have written. It is positive or zero, but it can never decrease. Entropy may increase, may remain constant, but it never decrease. Entropy कभी भी decrease नहीं हो सकती. Entropy change may be zero or it may be greater than zero, but it will never less than zero. कभी भी जीरो नहीं हो सकती. That you have to keep in mind because उसका रीजन है entropy generation. Okay, I hope you got it. Now my dear, we'll talk about the TDS relations. TDS relations के बारे में बात करेंगे. Don't worry my dear, still we are left with the, that is heat supplied, work transfer, उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा. Don't worry बच्चा पार्टी. See my dear, TDS relation you know that TH minus VDP, and it is also known as first law, combined equation of first and second law, right? TDS is equal to DH minus VDP and TDS is equal to DU plus PDV, applicable for both reversible and irreversible. But my dear, जब इनको derive कर रहे होते हैं, when we are deriving this equation, my dear, so at that time we have taken assumption that what, reversible process. Even we have taken the assumption that is the process should be reversible, but it is still applicable for reversible as well as irreversible process. Okay, okay bachcha party. Now my dear, see, and these equations are given, and this equation for calculating entropy change, and it is for ideal gas. Okay, ये किसके लिए दिए हैं बच्चा? आइडियल गैस के. रियल गैस के लिए we are going to use TDS equation. So my dear, here we have two equations. See here, पहला हो गया mcv ln t2 minus t1 plus mr ln v2 by v1. Another mcv ln p1 by p2 plus mcp ln v2 by v1. Another one mcp ln t2 by t1 plus mr ln p1 by p2. राइट, ये भी चीजें हो सकती हैं. तीन इक्वेशन आपको याद रखनी है बिकॉज दे विल गिव द डेटा. एंड माय डियर, सपोज टू बी, अगर थर्मल रिजर्वायर होगा, सपोज टू बी वी हैव थर्मल रिजर्वायर, अगर कोई थर्मल रिजर्वायर की बोलेगा आपको कन्वर्ट वो करने, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे? dq by t, इट इज योर ds फॉर थर्मल रिजर्वायर. ओके बच्चा, आई होप यू गॉट इट. एंड सपोज टू बी लिक्विड है या कोई फाइनाइट बॉडी है, लिक्विड है, कोई मास है या फाइनाइट बॉडी है, सो डेफिनेटली उसमें ds क्या लगाओगे आप? ds लगा दोगे आप mcp और mcln of t2 by t1. उसके लिए ये होगा. ओके, यू हैव टू कीप इन माइंड दिस थ्री फार्मूला बच्चा. ये तीनों फार्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको. ओके, सो माय डियर, हियर आई गो फॉर द नेक्स्ट. एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस इज इक्वल टू 0. पॉलीट्रॉपिक रिवर्सिबल प्रोसेस एमसीवी. हाँ, पॉलीट्रॉपिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए याद रखेंगे डेल्टा एस. समटाइम्स एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है और आपसे पूछ ले कैलकुलेट बिकॉज आप जानते हैं सी क्या होता है, सी पॉली क्या होता है बच्चा? सी पॉली क्या होता है? सीवी, राइट. क्या होता है? गैमा माइनस गैमा माइनस एन अपॉन, क्या हो रहा था बच्चा? क्या हो रहा था? एन माइनस वन, सॉरी. तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने? यहाँ पे माइनस एन एंटर भेज दिया. सो विल गेट सीवी एन माइनस गैमा अपॉन एन माइनस, राइट. सेम थिंग इज देयर, राइट ना, वही चीज है. बट द ओनली थिंग दे हैव पुटेड द वैल्यू ऑफ, ये किया है, ये पॉलीट्रॉपिक्स, इट इज नथिंग बट सी पॉली. ओके, आई होप यू गॉट इट. हियर आई गो फर्स्ट. Maximum amount of useful work achieved when the system goes under initial state to dead state, that is nothing but what, my dear? Availability. उसी को क्या बोलते हैं? Availability. और यहाँ पे वही चीज दिखाई हुई है, TS diagram, and there is a TS diagram, my dear. You can see it is what the amount, total amount of energy will be like this. ये पूरा का पूरा क्या है? Amount of energy है. But in that, my dear, this part, ये जो part है हमारे पास, this part, only this part is useful part, right ना? यही part हमारे पास useful part है. And remaining part is nothing but what, my dear? That is unavailable form of energy, right? So I hope you got it. So that's why the heat is what, my dear? Heat is low grade of energy. बच्चा पार्टी, please try to listen me very carefully. कि जब तक आप डेड स्टेट में आप नहीं ले जा पाते, जब तक आप डेड स्टेट अचीव नहीं कर पाते, तब तक आपको क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा. ओके, नाउ माय डियर, उसी चीज के बारे में डिस्कशन है. दैट इज व्हाट, सी हियर, W max, मैक्सिमम वर्क क्या होगा? दैट इज अवेलेबल एनर्जी
अवेलेबल एनर्जी दैट इज व्हाट QXY, दैट इज बिटवीन, अगर टू रिजर्वायर है तो प्रोसेस हमारे पास, तो QXY इज इक्वल टू माइनस T नॉट इनटू, एक्चुअली दिस इज व्हाट, दिस इज इररिवर्सिबिलिटी, ये क्या है, I है, I, and which is nothing but what my dear, T naught into delta S generation, or you can say entropy generation, delta S of universe. So definitely आप इसमें से irreversibility minus कर देंगे, तो whatever that is, irreversibility means what my dear, it is nothing but unavailable part of energy. So definitely W max is nothing but what my dear, the total energy you have supplied, total energy you have supplied minus unavailable part of energy. So definitely इसमें क्या बचेगा, इसमें सिर्फ बचेगा available part of energy. So that will be equal to what my dear, W max. Very simple. And याद रखिएगा, that is available part of energy, that is also known as exergy, and unavailable energy is known as energy. मैच द पेयर्स में पूछ सकता है गेट में. Okay, now my dear, we are going to discuss about exergy of a closed system. Exergy of a closed system की बात करें, so my dear, it should be what, E1 minus E2 plus P naught into V1 minus V2 minus T naught into S1 minus S2, इसके बराबर होगा ये. Okay, I hope you got it बच्चा पार्टी here. Now my dear, we're going to discuss about the maximum useful work and useful. Okay, इसके बारे में बात कर लेते हैं. See here, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, that is phi 1 phi 2. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, H1 minus H2 minus T naught into S1 minus S2 plus kinetic energy 1 plus potential energy 1 minus kinetic energy 2 plus potential energy 2, right? और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप. Okay, so my dear, these are nothing but ये जो है, it is what my dear, Helmholtz functions, right? This function that is G is equal to H minus Ts, and ये इसके बराबर होगा. My dear, I want to tell you कि I'll write one formula, that is W. You can say W, yes, W is equal to nothing but U1 minus U2 minus T naught into S1 minus S2 plus P naught V1 minus V2. So I want to let you know my dear, this is W max. ये जो होगा ये आपका हो गया W max, maximum. And when they ask find out W maximum useful, तो ये पूरा हो जाएगा. This is W maximum useful. And my dear, this is nothing but what, atmospheric work. Okay, I hope it's clear to you. Okay बच्चा पार्टी, now I'll go ahead. Irreversibility, that I already told you that it is nothing but maximum work minus W. Irreversibility कितना है, unavailable energy कितना है, that you can find out. That is what W max, whatever you have get, and minus my dear what actual you are getting. This is W actual. इन दोनों के बीच का difference, that is what my dear, unavailable part of energy. Okay, and my it is given by, this is nothing but what, Gauss-Todolo equation. इसको क्या बोला जाता है बच्चा, Gauss-Todolo equation, and is nothing but loss of available energy directly proportional to the entropy generated. जितना ज्यादा एंट्रोपी जनरेशन होगा सिस्टम में, उतना ही ज्यादा एनर्जी लॉस होगा. ओके, सो दिस वन. ओके बच्चा पार्टी, and this is known as Gauss-Todolo equation. I repeat, this is known as Gauss-Todolo equation बच्चा पार्टी. Okay, so now we'll talk about the pure substance. अब pure substance के बारे में बात करेंगे, right बच्चा पार्टी. So see here. Okay, ध्यान से देखिएगा. Pure substance of homogeneous and invariable composition, right? I already told you that it's a single component system. ये क्या होता है बच्चा, सिंगल कंपोनेंट सिस्टम होता है. It is single component system, right? And what my dear, केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा थ्रू आउट, राइट? वाटर की बात करी थी हमने, राइट? पीवी डायग्राम of pure substance, that is water, that is water की पीवी डायग्राम कैसी होती है, ये होती है, राइट? एंड वी हैव ऑलरेडी ट्राइड टू अंडरस्टैंड, हमने देखा था, राइट? और एक्सेप्ट वाटर, वाटर के सिवा जो होती है, दैट इज सॉलिड, सॉलिड प्लस लिक्विड, एंड इट इज लिक्विड, देन लिक्विड प्लस वेपर, सॉलिड प्लस वेपर, वेपर ओनली. इट इज व्हाट माय डियर, क्रिटिकल पॉइंट. सो एज यू मूव अपर साइड माय डियर, व्हाट विल हैपन, द heat required or the energy required for the phase change from saturated liquid to saturated vapor has been reduced, and my dear, at critical point it will become zero. That means above the critical point the liquid is directly flashed into the vapor without any energy. Right now I hope you got it. And my dear, याद रखिएगा कि dryness fraction at critical point and vapor region, it is undefined. And my dear, you know that at critical point, on saturated vapor line the dryness fraction is what my dear, 1, and at saturated liquid line it should be what my dear, कितना होगा वहां पे होगा हमारा, yes बच्चा पार्टी, it is how much,
it is 0. कितना होगा? 0, 0. I repeat, it should be 0. Okay. I hope you got it. Now, my dear, I'll go for the next. That I already told you AB. You can see here AB आपका क्या है? That I already mentioned AB, and ये triple point water line है. It is what, my dear? Triple point water line. Water line. याद रखिएगा, जो ट्रिपल पॉइंट होगा, that triple point of water H2O is appeared as point in, my dear, in PT diagram. प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम पे ही दिखाई देगा. ओके. एंड इसका क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है बच्चा? 221.2 बार, एंड इट्स टेम्परेचर इज 374.15 डिग्री सेंटीग्रेड. 374.15 डिग्री सेंटीग्रेड क्या टेम्परेचर, एंड माय डियर इट्स प्रेशर इज अराउंड 221.2 बार. ओके. आई होप यू गॉट इट बच्चा पार्टी. नाउ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट. आगे चलते हैं. ओके. So, my dear, this is the three-dimensional diagram that I have already shown about the triple point of water. कि that triple point of water कैसे आता है, my dear? Why? Because you see the pressure temperature diagram is there, and it is what, my dear? ये जो दिख रहा है आपका yellow color line that I have drawn, ये जो blue colored है, it is what, my dear? It is triple point of water. Okay, बच्चा पार्टी, I hope you got it. Now, my dear, I'll go for the next. Right? And why the phases has been hidden in PT? Because when you talk about the pressure and volume diagram, in that you can see the phase change. But, my dear, when you but in that, my dear, the pressure, or that is triple point of water, will be appear like a line. But, my dear, if you want to see the point, then you have to draw the pressure temperature diagram. But in that there is one thing, that is the phase change. आपको यहाँ दिख रहा होगा. There's a phase change. You can see solid is there. Then, my dear, here solid liquid is there. Right now, solid vapor is there. So that will be get eliminated in the pressure and temperature diagram. Okay. Now, my dear, this is a PV diagram that you can show here. I'll show you over here. You can say you are standing over here. यहाँ पे आप खड़े हैं. So definitely you can see the phase change: solid, solid, and liquid, liquid, vapor, critical temperature. Everything you can see. And, my dear, this is what, ये जो line दिख रही है, this line is what, my dear? This is your triple point line, water triple point line. This blue color line. Okay. I'll draw it again from orange color. ये जो line दिख रही है, orange color line. It is what, बच्चा? ये आपकी जो है, it is your triple point line, triple point water line. Okay, bacha party, I hope you got it. Okay, here I go for next. And HS diagram for pure substance. My dear, HS diagram कैसे दिखती है? You can see over here. HS diagram, Mollier diagram, you can see. And I want to tell you, यहाँ पे जो line जा रही होती हैं, that has been quite, उनके बीच का जो difference है वो बढ़ जाता है. That is broader section में जा रही होती है. As they move ahead, the gap between them, that means they are quite diverge section होता है उनका. That you have to keep in mind, बच्चा. Okay. Okay, my dear, that I already explained. These are nothing but TDS is equal to DH minus VDP. So TDS is equal to DH. Right now, at for constant pressure अगर लेंगे, so definitely it will become 0. So definitely क्या हो जाएगा? DH by DS at constant pressure will be what? It will equal to only temperature. That means it will depend temperature. So my dear, आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे वही चीज कि DH by DS, that is change in enthalpy with respect to entropy at constant pressure, represents nothing but temperature. किसको represent करेगी वो? Temperature को. That is change in enthalpy with respect to entropy at constant pressure. That line represent what, my dear? Temperature. Okay. And, my dear, dryness fraction, that is nothing but, I already defined this. Everybody know about it, right? And its value is what, my dear? Is equal to 0. Is equal less than or equal to 0, and it should be 1. 0 से 0 भी हो सकती है, 0 के बाद उससे ज्यादा भी हो सकती है, but it should be less than from 1. And it is undefined. Undefined कहाँ पे है? It is undefined, my dear, at critical point. At critical point, and, my dear, at what? Critical point पे, और कहाँ पे है? It is at in superheated region. In superheated region. ये ध्यान रखना है आपको. Okay, ये आपको ध्यान रखना होगा. Okay, and these are the formula for the enthalpy, that is HF plus X into HFG. My dear, HFG is nothing but what? Hg minus HF. The same thing for internal energy, same thing for the volume, right? But, my dear, if you want to find out rho, then you have to write like this, because it's a reciprocal of volume. So definitely it should be rho F plus what, my dear? X
what my dear, 1 upon rho fg. Okay, this will be the option for the density. इससे हम डेंसिटी फाइंड आउट कर पाएंगे. ओके ओके बच्चा पार्टी. enthalpy and specific entropy that I already given, right? ये देखो, ये डायग्राम है. Now if you want to find out the enthalpy, entropy or enthalpy, HA, that is what my dear, HB plus CPL TA minus TB, HB is equal to HF. देखिए यहाँ HB क्या किसके बराबर होगी, HF के बराबर होगी, HF at point B at particular pressure and temperature, right? Everybody know about it. ये तो सबको आपको पता है कि कैसे फाइंड आउट करना है. ओके, you know it about this thing, right bacha party? Yes or no? Of course. Okay, so now my dear, I'll go for the next, thermodynamic relation. So thermodynamic relation के लिए सबसे पहले जो है, we have defined some mathematical expression and that is cyclic relation my dear. Change in pressure with respect to volume at constant temperature multiplied by change in volume with respect to temperature at constant pressure, and cyclic है, that is equal to किसके बराबर होगा, -1 के बराबर. किसके बराबर होगा, -1 के बराबर, right? And these are the Maxwell relation that you have to keep in mind because पूछ ले गेट में तो पता नहीं, right? So you can see that del T by change in temperature with respect to volume at constant entropy is nothing but change in pressure with respect to entropy at constant volume. dt by dp at constant entropy is equal to dv by ds at constant pressure, right? Everything is given, so you can remember my dear this 4 Maxwell equations so that it is quite beneficial for you guys while attempting any examination, right? TDS equation में we have 2 TDS equation and by the help of that we have derived what my dear, Joule-Thomson coefficient, right? ना JT coefficient जिसको बोलते हैं हम लोग. So my dear, TDS is equal to what, CV dt plus T into del P by del T at constant volume into dV, and my dear, TDS is equal to CP dt minus T into del V by del T at constant pressure into dP, right? So these 2 equations are there for TDS relationship. Okay बच्चा? Okay, here we go. My dear, Joule-Thomson coefficient, JT coefficient, Joule-Thomson effect. My dear, see. Now see. यहाँ पे आपने different because Joule-Thomson coefficient, you know isenthalpic process, that is throttling. Throttling क्या होती है बच्चा? Throttling is nothing but isenthalpic process, that is enthalpy remains constant. H1 is equal to H2. So my dear, here you have drawn the processes, right? Different isenthalpy process at different enthalpies, right? ये भी throttling process है, right? And we have too many throttling process. My dear, the जो peak होगा, the peak value of the that particular temperature we have joined by the locus, that is वहां पे हमने point mark करे like this. So definitely my dear, ये locus को जब point है, when these points are get joined, so definitely they will form a curve, and that curve is nothing but what my dear, inversion curve. And the point is known as what my dear, inversion point. उन points को क्या बोला जाता है बच्चा, inversion point बोला जाता है. Okay, that points are known as inversion points, I repeat. And my dear, you get Joule-Thomson coefficient effect, that is this much. Okay, अब ये हो गया, अगर now listen to me very carefully, अगर ये हो गया, so definitely my dear, definitely इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, इन्वर्जन कर्व के लेफ्ट हैंड साइड में म्यू विल बी पॉजिटिव. म्यू मींस जेटी कोएफिशिएंट. ओके, आई विल टेल यू जेटी, एंड राइट हैंड साइड में क्या होगा, नेगेटिव होगा. नाउ द क्वेश्चन इज कि म्यू होता क्या है, व्हाट इज म्यू? सो माय डियर, म्यू इज नथिंग बट डेल्टा चेंज इन टेंपरेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, राइट? इट शोज व्हाट, म्यू क्या शो करता है बच्चा? Mu is nothing but change in temperature with respect to pressure at constant enthalpy. That is nothing but what? Mu, JT coefficient. So my dear, JT coefficient is negative. When it is negative, it means my dear, it will produce that is heating effect. मैंने बताया था ना कि sometimes temperature increase होता है, sometimes decrease होता है throttling में. So whenever there is an increment in temperature, so definitely it will show heating, and that at that time mu का जो slope, that is slope होगा dt by dp का, that is quite negative. That means what, mu is negative, right? And my dear, when the slope is positive, that is mu is positive, that time we are getting cooling effect, that is we are getting cooling effect, right? And यहीं से हमारा RAC चालू होता है. We are starting the RAC from here itself, right my dear? And one more thing that I want to add, कि जो inversion point होता है, the point at which the mu changes its direction from positive to negative or negative to positive,
So at that time, value of mu is 0. That means, and this value of mu is equal to 0. That means वो क्या होता है? It is for ideal gas. I already told you at that time, at that point temperature remains same, temperature will not change, and that I already explained कि वो क्या होता है? Ideal gas होता है. Okay, that is going to be ideal gas. Okay बच्चा पार्टी, is it clear now? ये clear है? Now my dear, see here, I already told you that heating effect mu is less than 0, that is temperature increases. Cooling effect mu greater than 0, temperature decreases. Mu 0, temperature constant. For ideal gas, mu is equal to constant, right? And remember one thing, beta is given, that is volume expansivity, that is 1 by V del V by del T at constant pressure, right? Isothermal compressibility, that is KT. It is not KT means like T is in suffix. T suffix में है. It is minus 1 by V del V by del P at constant temperature. Cp minus Cv is nothing but TV Vt square by KT, right? I hope you got it, bacha party. So, and this is this thing you have to remember, my dear. Now you have to remember, my dear, एक Clausius-Clapeyron equation. It is very important as per gate point of view. Gate point of view is a very important equation, guys. Please keep in mind कि Clausius-Clapeyron equation क्या होती है. Otherwise you will be in trouble because इस पे जो numerical आएगा direct आएगा. So my dear, what day या आप लिख सकते हो del P by del T at constant volume. It should be what, my dear? Hg minus Hf into T into Vg minus Vf. Now I'll tell you. Vg is quite too much greater than from Vf, right? So definitely क्या हो जाएगा? Hg minus Hf मतलब latent heat, ये latent heat हो जाएगी. So definitely Tg into Vg. So my dear, you know that PV is equal to RT. So ये क्या हो जाएगा? V क्या हो जाएगा? V is equal to RT by P. V equal to क्या हो जाएगा? RT by P. So can I write latent heat into pressure divided by what, my dear? RT square. So this is nothing but ये देखो आप convert हो गए यहाँ पे. Conversion कैसे हुआ है? That I already explained. Because Vg is quite greater than Vf. So definitely Vg क्या हो जाएगा? Vf क्या हो जाएगा? Vf will get 0. So definitely नीचे Vg रहेगा. And Vg I can find out by this equation. PV is equal to RT. From that I will get V is equal to RT by P. Right? है ना? And my dear, same thing. There is another equation. There is a pressure ratio will be nothing but latent heat divided by R 1 upon T1 minus 1 upon Tp2. ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. Okay? You have to keep in mind this two formulas, बच्चा. Right? Now, my dear, we'll see कि अभी work हमने नहीं देखा था. Right now, we have not seen the work. Right? So, my dear, एक बार उस work को देख लेते हैं कि different processes में work done क्या होता है. And बच्चा पार्टी क्या? Wait, हाँ. And before that, let's represent the various processes on a single diagram. ठीक है? Because there is a chance कि 1 marks के question, 2 marks के question वहां से आ जाएं. Okay, बच्चा पार्टी. So here we go. चले हैं. So बच्चा पार्टी here I go. See my dear. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं. That is work transfer. I am talking about for the non-flow process. Okay. Flow system की बात करूंगा मैं यहाँ पे. Okay. Non-flow work. Okay. हम बात किसकी कर रहे हैं? We are talking about non-flow work की बात करना है. Okay, बच्चा पार्टी. So try to listen me very carefully. It's very easy that you know that. Suppose to be, my dear, first process we have constant volume. That is isochoric process. इसको क्या बोलते हैं? Constant volume process. So my dear, you know that we have already derived dq is equal to what, बच्चा? du plus pdv. Right now, यही किया हमने derive. Right? So my dear, definitely बात ध्यान रखिएगा. अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, कभी भी कोई भी सिस्टम में वर्क हुआ है नहीं हुआ है. बिकॉज क्या होता है, तो एक बात याद रखिए, सपोज टू बी इन फिजिक्स में व्हेन यू अप्लाई फोर्स टू दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, सपोज टू बी आपने फोर्स अप्लाई किया, राइट, एंड ये सरफेस पे रखा हुआ है ब्लॉक, एंड दिस इज मूव बाय सपोज टू बी डिस्टेंस x, राइट. सो आप लोग क्या बोलते हैं कि दैट इज f into x, जो डिस्टेंस से मूव कर गया, दैट मींस वी कैन से दैट इज अ वर्क डन. ये क्या हुआ, फिर हम लोग बोल देते हैं अगर ये मूव कर गया तो हम लोग बोल देते हैं देयर इज अ वर्क डन, राइट. But in the system, sorry, when we talk about thermodynamics, my dear, we cannot say. What we do, supposed to be the bond, there is a work transfer in the system, that is in thermodynamics. So definitely there is change in boundaries of the system. अगर work done उस पे हुआ है या उसने work done किया है, so definitely the boundaries of the system will get changed. Like this, my dear. Supposed to be, आपके पास you have this kind of a system, and my dear, supposed to be this system is get converted into this. That means what? It has been expansion. ये क्या हुआ? Expand हुआ है, right now. So definitely expansion has been done. That means what, my dear? It is positive work. So definitely it should be nothing but what, my dear? It is work done by system. It is work done by system. And my dear, supposed to be
my system is like this, and my dear, it has been changes to this. So that means what happened, my dear? It has been contracted. That means compression. It has been contracted. That means compression. So it should be what, my dear? It should be negative work. ये क्या होगा? Negative work होगा. Okay. It should be going to be a negative work, bacha party. I repeat, it should be going to be a negative work. And my dear, it is known as, it is what? Work done on the system. It is work done on the system. So my dear, you know, non-flow process, definitely volume constant ये गया गुजर गया, right? अगर ये गुजर गया, so my dear बचा गया, heat की बात नहीं कर रहे हैं हम, work done की बात कर रहे हैं, sorry. So definitely we have written first law of thermodynamics. If work is constant, my dear, you know that for non-process this is what? PdV. So definitely change in volume is 0. So my dear, W is equal to what? 0 for constant volume process in closed system. I'm talking about in closed system. Okay. Now my dear, if I go for this one, अगर मैं अभी constant वो ले लूं, pressure ले लूं, constant pressure, you can say isobaric or my dear isopiastic process. That is P remains same. So my dear, you know that W is nothing but integration PdV, right? So definitely PdV अगर होगा, so definitely it should be what, my dear? P into V2 minus V1. ये हो जाएगा. अगर मैं बात कर लूं इसकी isothermal की, that is temperature remains constant. So इस पे क्या होता है work का formula? Yes, anybody of you? My dear, if you remember, then it should be nothing but what, my dear? P1 V1 ln of, किसके बराबर होता है? V2 by V1 के. और you can say, my dear, P1 V1 ln of what बच्चा? P1 by P2 के. और you can say P1 V1 के जगह पे आप MRT1 लिख सकते हो. You can replace P1 V1 by MRT1. You can replace P1 V1 by P2 V2. Even you can replace it by MRT2 as well. Right? It depend on you. उसमें 2-3 फॉर्म बनते हैं. Okay. Now my dear, if I go for the adiabatic process, अगर मैं adiabatic process की बात करूं, if I talk about the adiabatic process, then my dear, you know that it is nothing but P1 V1 minus P2 V2 divided by the gamma minus 1 होता है, right? If I talk about, my dear, polytropic, if I talk about polytropic, you know that W poly is nothing but what, bacha? P1 V1 minus P2 V2 divided by what, my dear? N minus 1, right? क्या होगा? N minus 1. Okay, I hope you got it, bacha. Very good. It is what? It is basic formulas are there. These are the basic formulas. Okay, bacha. Here I go for next. Number 6. Number 6 is, now my dear, people said, see here, I'll tell you. Supposed to be, my dear, I have, now I'll tell you that how the area represent, area under PV diagram is nothing but what? Supposed to be, this is a process 1 to 2. एक कोई process हुई है 1 से 2. Okay बच्चा. Now listen to me very carefully. अगर ये process हुई है, so my dear, see, area under the curve will be like this only. So definitely, if you want to find out the area of this whole curve, तो क्या करना पड़ेगा आपको? Supposed to be, I have taken the strip, this strip, right? ये strip मैंने ले ली, right? छोटी सी. So definitely, इसका क्या होगा? एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा, my dear, P into V, right? वॉल्यूम होगा 2, प्रेशर तो एक ही होगा, राइट? प्रेशर तो एक ही होगा, वॉल्यूम 2 हो जाएंगे इसके, राइट? वॉल्यूम 2 हो जाएंगे. सो माय डियर, व्हाट विल हैपन? डीवी वॉल्यूम हो जाएगा इसका, राइट? V2 minus V1 ना. ओके, सो माय डियर, एरिया, बट वी हैव इन दिस, इस एरिया के अंदर में, इनसाइड दिस एरिया और इनसाइड दिस कर्व, माय डियर, वी हैव n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स. ऐसी n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होंगी, राइट? ऐसी n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होंगी कि नहीं होंगी? So my dear, that means you can find out the area by having integration from 1 to 2 and PdV, and my dear, it is nothing but what? So that's why people said the area enclosed in PV diagram represents nothing but what, my dear? Represents nothing but what, my dear? Okay, I hope it's clear to you. अभी समझ में आई बात? Guys, had you got it, this thing what I'm explaining over here? बच्चा पार्टी समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इसके अंदर n नंबर ऑफ स्टेप्स होगा. अगर n नंबर ऑफ स्टेप्स होगा, so definitely we have to do the integration from 1 to 2, and my dear, you'll get PdV,
and it will represent what? Nothing but what. So that's why we can say the area enclosed in PV diagram is nothing but what, bacha? What. Okay, I hope you got it, bacha party. Now my dear, I'll go ahead. भी आगे चलते हैं. Now I will draw two diagram because it's compulsory कि इसको मैं बता दूं because sometimes they ask the question from here as well. डायग्राम पे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है पीवी डायग्राम पे. So let me draw this. पीवी पीवी दोनों प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है. ओके, दोनों प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम. बच्चा पार्टी लिसन टू मी वेरी केयरफुली. महेंद्र वेरी गुड. सो बोथ आर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम. ओके माय डियर, सी देखेगा ध्यान से. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. और supposed to be I have process like I have equation PV raised to power k is equal to constant. Okay, PV raised to power k is equal to क्या है बच्चा? Constant है मेरे पास. और you can say PV raised to power k है. Okay, constant है. Now listen to me very carefully. ध्यान से देखिएगा बच्चा. Okay, या PV is equal to वेट, हाँ, PV raised to power k है and supposed to be I have equation constant, right my dear? See here. Okay, so see here my dear, here I can write the value of k and here I'll write process name. Okay, so my dear, see, you know that if I took PV is equal to 0, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूं तो प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो मतलब क्या हो जाएगा? अगर यहाँ 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट P means कांस्टेंट प्रेशर. सपोज टू बी माय डियर, इफ आई take the value of k is equal to 1, so it should be what? PV equal to constant, and PV is equal to constant nothing but the value of what, my dear? Isothermal. All right, so if I taken 1, that means what, my dear? It is constant temperature. It is constant temperature, right my dear? If I took the value k का वैल्यू अगर मैं n के बराबर ले लूं, so it should what, my dear? Polytropic. If I take the value of k as what, my dear? What? Gamma. So it should be nothing but what, my dear? It is adiabatic. And my dear, remember one thing that यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, but definitely I want to let you know कि when you took the value of k as infinity, my dear, that process is nothing but what? Constant volume. वो क्या बनती है? Isochoric. That is constant volume. Okay. So my dear, we are going to plot this process on this diagram both for compression as well as expansion. दोनों compression के लिए भी draw करेंगे और expansion के लिए भी draw. These are the remaining parts that we have left in starting. ये starting में होना चाहिए था, right? Very good, very good. Here my dear, see, ध्यान से देखिए. ध्यान से देखिएगा. First let me draw for expansion. Okay, see my dear, इस लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट, so definitely I can say it is what? K is equal to 0, that is constant pressure line. इसमें K is equal to 0, that is constant pressure line, right? So definitely इसमें क्या होगा? K is equal to infinity, right ना बच्चा पार्टी? Try to listen मेरी, ध्यान से देखो बच्चा. Okay, now my dear, टेम्परेचर के लिए कितना है? 1. So I have drawn 1. Okay, very sorry. It is k is equal to 1, and you know that value of n, that is polytropic index, is more than 1. So definitely isothermal कर्व से थोड़ा सा steep होगा, steep हो जाएगा. See here, it has been steep little bit. It has been steep, right? So it is what, my dear? K is equal to n, and gamma, that is that is adiabatic process index, is quite higher than that of what, my dear? आपको पता है, you know that the value of the practical value, that is what, 1 is greater than from n is greater than from gamma, gamma is greater than from n, right? ये relation आपको पता होना चाहिए, right बच्चा पार्टी? So my dear, here that is really polytropic process. ये क्या हो जाएगी? Polytropic process काफी ज्यादा steep हो जाएगी. Okay, it is what, my dear? It is too much steep, right?
should be k is equal to gamma. Okay, and this is k is equal to infinity. I hope you got it. So this is for expansion. बच्चा पार्टी ये किसके लिए था? एक्सपेंशन के लिए. Now we are going to talk about बच्चा पार्टी किसके लिए टॉक करेंगे अभी? Now we are going to talk about the compression process, right? सही. यहाँ देखेंगे ध्यान से आप सभी लोग. Just see here carefully. ध्यान से देखेंगे. So definitely it should be what, my dear? K is equal to infinity. ये K is equal to 0. That is constant pressure है यहाँ पे, right? So definitely सबसे ज्यादा steep किसका होगा? ये हो जाएगा 1 का. That is what, my dear? It is what? It is your isothermal, right? My dear, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? इसके बाद wait. It is your isothermal, right? It is your polytropic, right? And this will be what, my dear? This is what? Adiabatic, right? It is what, my dear? It is K is equal to gamma. It is what, my dear? K is equal to what? N. And this is what? K is equal to 1, right? So this will be look like, this process will look like this in compression, and this is for expansion. Okay, bacha party, I hope it's clear. Same thing we have drawn. This is for compression and this is for expansion. Okay, आपको जो चीजें याद रखनी है, that is short notes, you can just take a screenshot of it. Screenshot ले लीजिएगा, and this video will be available, right? So definitely it will work like in a that short notes as well for you guys. Okay, for revision purpose. Okay, bacha, I hope you got it. Now, my dear, we'll go for the heat transfer. The heat transfer कैसे होता है, that we're going to see for each and every process. Okay. So, my dear, see here. Now, give the heading heat transfer. Heat transfer in various process. Sorry, heat transfer in various process. Heat transfer in various process. ओके, हीट ट्रांसफर देखते हैं बहुत सारी प्रोसेसेस में क्या होता है. ओके बच्चा पार्टी, सी हियर, ध्यान से देखेंगे हियर. माय डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम. पहली प्रोसेस जो हम लेंगे वो लेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज V इक्वल टू C में क्या होता है हीट ट्रांसफर. सी हियर, कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस. माय डियर, यू नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज dq इज इक्वल टू du प्लस dw, राइट ना. So I did definitely, अगर ये constant volume है, so definitely it should be what? Constant volume रहेगा, तो definitely it will get 0. ये 0 हो जाएगा. That means dq is equal to du is equal to what बच्चा? mcv dt, right? mcv dt के बराबर हो जाएगी, right ना? Yes or no? Because du आपको पता है it is mcv dt, right? My dear, now if I talk about constant pressure, अगर मैं constant pressure की बात करता हूँ, if I talk about the constant pressure, that is constant pressure process, in that, my dear, what will happen? Again, I'll write the same equation, that is what? dq is equal to du plus what, my dear? dw, and that will be what? pdv, right? Yes, ऐसे हो जाएगा. So my dear, I can write what, my dear? d अगर बाहर ले लूं, I can write u plus pv, and u plus pv is nothing but what? Enthalpy. So my dear, I can say dq is equal to dh फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. किसके कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में किसके बराबर होती है? एंथैल्पी के बराबर होती है, राइट? इट इज इक्वल टू द एंथैल्पी, राइट माय डियर. सी हियर, एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस dh इज इक्वल टू व्हाट, माय डियर? mcp dt, राइट? किसके बराबर होगी? mcp dt के बराबर. इफ आई टॉक अबाउट, माय डियर, आइसोथर्मल, अगर मैं बात करूं T इक्वल टू C की, दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसमें क्या होगा? दैट यू नो दैट dq इज इक्वल टू व्हाट बच्चा? du प्लस व्हाट? pdv, और del w आई कैन से. सो माय डियर क्या होगा? और dw you can say, sorry, dw. So definitely du, definitely the temperature remains constant, so definitely, my dear, the change in internal energy will be 0. That means, my dear, dq is equal to what? dq किसके बराबर होगा? dw के, and it should be equal to what, my dear? It is equal to p1 v1 ln of, we have already derived बच्चा पार्टी, right? It is v2 by v1 or p1 by p2, whatever you want. v2 by v1,
Write down, or you can write P2 V2 ln of V2 by V1. You can write MRT1. You can write anything, right? So my dear, I'll go for the next. अभी आगे चलें. Isothermal का भी हो गया. Now my dear, I have another parameter, right? I have another parameter. अगर मैं बात करूं adiabatic की, so adiabatic में there is no heat transfer, so definitely क्या हो जाएगा? Q is equal to 0. Q is equal to क्या होगा बच्चा? 0 हो जाएगा. Okay? Yes or no? Of course. Now my dear, see here. Whatever I have seen, यहाँ पे हमने represent नहीं किया क्या? Adiabatic में we have represented. Very good. See here my dear. Q is equal to 0 हो जाएगा, right? Now my dear, if I talk about polytropic process, more very interesting, that is polytropic. Polytropic में क्या होगा? Yes, anybody have any answers? बच्चा पार्टी? Yes, very good. My dear, see here. Again, that polytropic process की जब आप बात करते हैं, so in that my dear, in that we are getting Q is equal to, Q किसके बराबर होगा? Yes, बच्चा पार्टी. It is equal to, yes, anybody have any answer? That is nothing but work done in polytropic process multiplied by gamma minus 1 upon my dear gamma minus 1, and this will be the expression for Q poly. Okay, heat transfer in polytropic process. My dear, sometimes they ask the specific heat for polytropic process, so in that it will be what my dear? Minus CV, and it should be gamma minus n upon n minus 1. My dear, now there is a question why it is negative. So my dear, I want to tell you, even when you supply the heat in the polytropic process, so temperature should be increased now. So instead of increase in temperature, the temperature is quite decreasing. And why it is so? Because my dear, whatever the amount of heat that you are supplying, supposed to be the work you are getting, that should be greater than from Q. That means what supposed to be you have supplied 10 kilojoule of heat, my dear, then you are getting 12 kilojoule of work output. So it will sound like it seems like it's not possible. So I want to tell you, my dear, this 2 kilojoule, the जो additional 2 kilojoule है, this work output came at the cost of what, my dear? Internal energy. So what will happen? Internal energy has been consumed, so definitely the temperature will drop. Temperature क्या होगा? Drop होगा, and that's why this negative sign came. Right? I hope you got it, बच्चा पार्टी. I hope you got it. So this is all about the CV, right? My dear, you know that. And एक बात याद रखें, Cp minus Cv, that is, you know that it is what? Mayer's equation. ये क्या है बच्चा? ये Mayer's equation है. क्या है? इसको बोलते हैं Mayer's equation. And you know that Cp by Cv, that is gamma, and this gamma is equal to 1.67. किसके लिए बच्चा? ये monoatomic के लिए. It is monoatomic gas, right? My dear, if it is 1.4, it is what? Diatomic gas. It is diatomic, right? And my dear, supposed to be, if it is 1.3, then it is triatomic gas. It is triatomic gas, right? I hope you got it. I hope you got it. Very good. I hope you got it, बच्चा पार्टी. Here I go for next. चलें आगे. Here we go. Okay. So बच्चा पार्टी, here I go. So my dear, here we get triatomic के लिए हो गया. Now एक क्वेश्चन और पूछा जाता है sometimes in terms of, ये याद रखिएगा कि Cp जो होगा ना, sometimes Cp is what, my dear? Gamma into R upon gamma minus 1, and Cv is nothing but what? R upon gamma minus 1 भी होता है. That you have to keep in mind. Okay, बच्चा पार्टी, I hope it's clear to you. हाँ जी, ये दो फॉर्मूले भी याद रखेंगे आप, right? So this is all about what, my dear? This is all about, and remember one thing, जो आपने Cp poly find out किया है, C poly जो find out करा है, that is nothing but minus Cv gamma minus n upon what बच्चा? N minus 1. So I want to tell you कि इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो? You can write Q poly divided by M into T2 minus T1, and that will be equal to what? It is also helpful while finding out heat added in polytropic process. Formulas को आपको कई तरह से modify करना होगा, then and only it is possible for you guys. Okay. Yes, Mahendra, anything happened wrong? आपने कोई comment retract करा? I'm not getting. Mahendra. Okay, if you guys have any query, then please put it on the chat box.
Okay, so bacha party, I hope you got it. Gamma minus n upon n minus 1, that is Q polytropic, right? I hope you got it, bacha party. So no, why this formula is useful? Why I'm telling in this language? Because sometimes आपको polytropic process दे देगा and they will give the temperature difference as well, and they will ask what is the amount of heat added. So at that time you should be able to find out in this way, right? And they will give you a CV. They will provide the value instead of providing the value of polytropic. They will provide the value of specific heat at constant volume. And my dear, you know that Cp is greater than from Cv, right? Why it is so? Because see, I'll show you the experiment. ये greater होता है, you know that, right? See, my dear, I'll tell you. There I have two beakers, right? Supposed to be I have supplied heat from here, right? यहाँ पे भी मैंने heat supply करी है. Okay. So what will happen, my dear? क्या होगा? I have to maintain constant volume over here. So ये क्या होगा? I have to put the stoppers over here. So my dear, here you are getting heat, so definitely internal energy is going to be increased. Here you are giving heat, so definitely internal energy increase. And this piston will move upside. That means what, my dear? Again, there is a work done by system. So definitely यहाँ पे दो चीजें include हो रही हैं, that is internal energy and work done. But here, due to the constant volume, there is no work done. So definitely it is what CV and it is what CP. So definitely CP will be greater than from CV, right? You got it? Very good. Okay, so guys, this is all about why the CP is greater than from CV, right? I hope you got it. Yes, bacha party. Now, my dear, we are done with this one, right? So my dear, I have told you one equation, that is steady flow energy equation. मैंने बताया था आपको, right? In that, so I have told you that like what H1 plus V1 square by 2 plus GZ1 plus Q is equal to what, my dear? H2 plus V2 square by 2 plus GZ2 plus what, my dear? W. So my dear, we have done the application. इसका जब हम application कर रहे होते हैं different devices पे. So my dear, when I applied this to the nozzle, जब इसको आप nozzle पे apply करोगे, so you have to took some assumption, that is what steady flow होगा एक तो nozzle में, nozzle and diffuser बच्चा, okay. Steady flow होना चाहिए. There is change in potential energy, क्या होना चाहिए? 0. What else बच्चा? What? Adiabatic. There is no transfer of heat, that is there is no transfer of heat. Q is equal to 0. And my dear, work done by the control volume will be 0, right? So definitely, my dear, if I talk about nozzle, अगर मैं nozzle की बात करूं, so what will happen? क्या होगा? There is no work done, there is no potential energy, right? And my dear, ये भी नहीं होगा and ये भी नहीं होगा. What we are left with? We will left with H1 plus V1 square by 2 plus H2 plus V2 square by 2. So definitely nozzle का जो initial velocity होता है, that is quite 0, तो ये भी cancel out हो जाएगा. So what we are left with, my dear, we are going to get, मैं इस पैसे okay कर देता हूँ. So my dear, you are going to get V2 is equal to, my dear, क्या equation आएगी आपके पास में? 2 into H1 minus H2 under root, right? But I want to tell you, ये जूल में होगा, so definitely it will be in meter per second, right? But my dear, supposed to be it is in kilojoule. अगर ये kilojoule में है, so यहाँ पे 2 की जगह पे the formula will be, if it is in kilojoule, my dear, here V will become 2000 delta H, right? Please keep in mind, if it is in kilojoule, then use this formula. Delta H means what? H1 minus H2 will be as it is. Bacha party, had you got it? Yes, very good, Anish. I hope you got it. Now, my dear, if I talk about diffuser, अगर मैं diffuser के बारे में बात कर रहा होता, so the same thing is that in the diffuser, what, my dear? V2 is quite 0. V2 is very less from V1. इसमें क्या होता है? V1 is very less nozzle में. V1 is very less than V2, right? And V2 में क्या? Diffuser what? We are using diffuser to have an increase in pressure, and we are using nozzle to have an increase in velocity, right? So my dear, V2 is very less than from this one. So definitely I will get the same equation, same जो assumptions है, assumption will remain same. And my dear, I am going to get V1 is equal to for diffuser. क्या आएगा बच्चा? It is should be H2 minus H1. And the same funda will applicable. Again I'll say कि अगर ये जूल में है, so definitely meter per second, and suppose if it is in kilojoule,
then you have to multiply this 2 by 1000, then it will become in joule, right? joule में कर लेना है उसको. And my dear, the same thing I have told you over here. यहाँ पे आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा काइनेटिक के जो पोटेंशियल एनर्जी को दोनों साइड, देन एंड ओनली यू आर गोइंग टू गेट इन मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे ये किलो जूल हो चुका होगा. ओके ओके बच्चा पार्टी. नाउ व्हेन वी अप्लाई दिस टू द टरबाइन, जब हमने टरबाइन पे लगाया ये इक्वेशन, व्हेन वी अप्लाई दिस इक्वेशन, when we have applied this equation to turbine, जब टरबाइन पे इसका एप्लीकेशन करा, so what I will get my dear, क्या मिला हमें उस टाइम पे, what we got at that time. So my dear, see here, so when we have taken the turbine, my dear, so in the turbine what we get, assumption will be what my dear, steady flow. And what else, change in potential energy and kinetic energy is what my dear, 0. And what my dear, it is what, adiabatic, that is q is equal to 0, right? And my dear, so definitely जो इक्वेशन होगी हमारी, see this will get cancel out, ये दोनों cancel out होंगे, ये भी adiabatic है, ये भी cancel out, sorry h2 cancel out नहीं होगा, this will get cancel out, this will get cancel out, we are going to get h1 minus h2. हमें क्या मिलेगा, h1 minus h2 ना बच्चा पार्टी, yes or no, right? So my dear, I can directly write, I'll get W is equal to H1 minus H2, right? And my dear, supposed to be, if I apply the same equation to the, I can say compressor. So compressor में लगा रहे होते, so definitely my dear, what I'll get, again I'll get W H1 minus H2, but ये क्या आया होता, ये नेगेटिव आया होता. So definitely my dear, it is what, negative आएगा magnitude, right? So that's why we write W is equal to what my dear, H2 minus H1. क्या right लिखेंगे वहां पे, H2 minus H1, and this is nothing but what my dear, W input. ये क्या होगा, it is work input. Okay, it is W input. Okay बच्चा पार्टी, I hope you got it. Yes, very good. H1 minus H2 for turbine, but my dear Anish, when you come to the compressor, so again you'll get the same thing, but that H1 minus H2 difference will come negative. That means it is nothing but work input. So you can change it and you can get it H2 minus H1. So that means बच्चा पार्टी वो क्या हो जाएगा, हाँ जी, वो हो जाएगा work input, right? I hope you got it. Now my dear, अभी एक और चीज बताता हूं मैं आपको, that is throttling device. We have also applied this equation to throttling device. हमने थ्रॉटलिंग डिवाइस को भी अप्लाई किया था ये इक्वेशन. We have applied this equation to the throttling device as well, right? So we have taken some assumption in throttling device as well. That is what my dear, we have taken change in kinetic energy is equal to 0, change in potential energy, what my dear, is equal to 0. What we have taken work done by control volume will be 0, and my dear, we have taken there is no heat transfer, that is Q is equal to 0. So definitely if you have taken this assumptions my dear, so you know that, see आपका ये 0 हो जाना है, ये भी 0, ये भी 0 my dear, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, H1 is equal to H2. That's why I said it is nothing but isenthalpic process, right? ये क्या हो जाएगी, isenthalpic process, right? That means you are going to get what my dear, H1 is equal to H2, that is isenthalpic process. क्या हो गई ये हो गई isenthalpic process. क्या हो जाएगी बच्चा, it should be your isenthalpic process, right? I hope you got it. Now my dear, now we'll discuss about energy quality. एनर्जी क्वालिटी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, राइट? सो यू नो दैट एनर्जी क्वालिटी, दैट इज, तो एक होता है लो ग्रेड एंड एक होता है हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी. सो लो ग्रेड ऑफ एनर्जी, दैट इज नथिंग बट व्हाट माय डियर, हीट. व्हाई इट इज सो, आई विल टेल यू. एंड इट इज व्हाट माय डियर, हाई ग्रेड work, potential energy, kinetic energy, and etc. Right? So why it is low grade energy? Because it is a highly disorganized form. It is in highly disorganized form. While work is what my dear, it is in a highly organized form. So due to which what heat
heat is treated as low grade energy, where the work, potential energy and kinetic energy is treated as what? High grade of energy. And I want to tell you one thing, whenever they say that there is a workout input, that means we are not going to take any kind of, that means entropy content in that high grade of energy will be zero in thermodynamics. ये assumption हम मान के चल रहे होते हैं कि जो high grade of energy होंगे उसमें जो entropy होगा, that entropy content will be zero. Entropy content will be zero. Now why we are treating this heat as a low grade of energy, I will tell you, my dear. See, I will give the example. It depend ki how much heat will get converted into work and how much work is get converted into the heat, right? So my dear, see, when you rotate, supposed to be you have ring है आपके पास में, supposed to be कोई, sorry, supposed to be you have tire or ring, right? And you are rotating it, right? So what you have given work. If it is rotating, my dear, when you apply brake, जब आप brake लगाओगे इस पे, so definitely the brake shoe will get hotter, that is temperature increase होगा. So that means work has been get converted into heat, right? Now my dear, I have taken another case. I have taken this ring again. Now my dear, what I'll do, I will just put a heat. इसमें मैं heat supply करूंगा. Shall this will rotate? क्या ये ring rotate करेगा? No, it's not possible. So that's why what, my dear, due to the conversion, the work is get converted into heat in a more percentage rather than heat into work. So that's why my dear, heat is treated as what, my dear? Heat is treated as low grade energy, that is LGE, and work is treated as what, bacha? It is HGE, and potential energy, kinetic energy, and so on. Right, bacha party? I hope you got it. Very good. If you got it, that's very good, my dear. Now I'll go for next. आगे चलते हैं. Okay. So now, my dear, what we are left with now? रुको देखने दो क्या है चीज बची हुई है. We are done with it, right? हाँ. एक और चीज, that is heat engine in series. जब heat engine series में होंगे, heat engine in series अगर हैं, supposed to be sometimes they ask the question, that is heat engine in series. Heat engine अगर series में है, so my dear, I want to tell you, see, दो engine series में लगा देगा. They'll say that two engines are in series. Then what should be the eta equivalent? Eta equivalent for two engines, right? So suppose two engines are series. Two engines are connected in series. Having efficiency, उनकी efficiency क्या दे देगा आपको? Eta 1 and eta 2. Okay, and they will ask what is eta equivalent. So my dear, eta equivalent will be what, my dear? Eta 1 plus eta 2 minus eta 1 into eta 2. So this is nothing but formula for, ये जो formula है, this formula is for only for two engines. But supposed to be अगर उन्होंने बोल दिया that I have n engines, so अगर supposed to be you have n engines, अगर आपके पास में n engine है, n engine are there, n number of engine, n engines are there, right? n engines है आपके पास में. So at that time बच्चा पार्टी क्या करेंगे हम लोग? Listen to me very carefully. Listen to me very carefully. 2 minutes. N engines are there. So at that time, eta equivalent will be what, my dear? 1 minus eta 1, 1 minus eta 2, 1 minus eta 3. जितने इंजन होंगे उतनी ज्यादा efficiency लगेगी up to what, my dear? 1 minus eta into n. Okay, so this will be the better formula for every engine. ये कोई भी इंजन की efficiency निकाल लेगा कितने भी इंजन रहो, right? I hope you got it, बच्चा पार्टी. Please keep in mind this one, okay? And sometimes, okay, everybody, sometimes they ask a question like this, कि I have two engines I have connected in series, right? So they give a condition like for same work output, for same
work output, for same work output, what should be the T2 temperature? जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, you have connected, supposed to be, there are two engines, you have connected like this, supposed to be, wait, राइट, ये आपके पास में इंजन है, राइट, दो इंजन काम कर रहे हैं आपके यहाँ पे, एक ये है, एक ये है, राइट. So definitely my dear, it is temperature T1, it is temperature T2, it is temperature T3, right? It is given W2 engine 2, right? And it is what, engine 1, so definitely यहाँ से work done आएगा W1, right? So now they ask question कि what is, for same work output, what is T2? T2 will be what? So my dear, at that time T2 is nothing but T1 plus T3 by 2, that is T1 plus T3 by 2, और you can say arithmetic mean. क्या है? arithmetic mean होता है. क्या है बच्चा? ये arithmetic mean है. But sometimes they ask a question like this, for same efficiency, that is eta 1 is equal to eta 2. यहां पे क्या था बच्चा? W1 is equal to W2 था, right? So eta 1 is equal to eta 2. So at that time my dear, T2 is nothing but it should be going to be a geometric mean बच्चा. ये हो जाएगा geometric mean, right? ये क्या होगा बच्चा? Geometric mean. And I want to tell you, it should be nothing but geometric mean. बच्चा पार्टी, आई होप यू गॉट इट. यस, समझ आ रही चीजें? हाँ, ओके, आई होप यू गॉट इट. एंड रिमेंबर वन थिंग, आई विल गिव सम पॉइंट्स. I hope it's clear to you, everybody. If it is clear, my dear, then I want to tell you a few things. My dear, एक चीज और याद रखिएगा. That is slope of constant volume process is quite higher. क्या होता है? Slope of constant volume process is greater than that of constant pressure process. Okay, so my dear, see here, dt by ds which is at constant volume, उसका स्लोप क्या होता है बच्चा? It is t by cv. Okay, it is quite greater than from dt by ds at constant pressure, which is nothing but बच्चा किसके बराबर होता है? t by cp के बराबर. And you know that my dear, cp is greater than, so definitely ये क्या आएगा? लेस आएगा. So जब इनको प्रोसेस जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कंप्रेशन और एक्सपेंशन के लिए, so it will be look like this only. ये ध्यान से देखें. TS diagram, I am going to draw TS. Okay, ध्यान से देखें बच्चों. Listen to me very carefully. It should be like this, okay, and it should be like this. Sorry, right? I hope you got it. So it should be what, my dear? ये V equal to C होगा, ये P equal to C होगा, and my dear, here यहाँ पे ये V equal to C होगा और ये P equal to C होगा, right? I hope you got it बच्चा पार्टी. It's clear ना? Yes, Anish, Mahendra, guys, I hope it's clear हो गया ना? If it is not clear, then please let me know. I will explain in another way, और कोई वे में समझाऊंगा मैं आपको. Okay, now my dear, now listen to me very carefully. Another thing, एक और चीज सुने आप लोग. Okay, now my dear, एक चीज सुन लें
case sometimes supposed to be there are two liquids. ये सब special conditions हैं. These are special conditions. Sometimes they may ask the numerical. Supposed to be I have two blocks. मेरे पास दो blocks. Okay, I have two blocks. I have two blocks. Okay. I have two blocks, that is M1, C1, T1, M2, C2, T2, right? I have two blocks and these two blocks are got mixed. इन दोनों को mix कर रहे हैं and having mass M1, specific heat C1, T1, right? M2, C2, T2 है, right? So my dear, now they ask what is final temperature? TF क्या होगा इसका? What is TF? That is final temperature. Final temperature क्या होगा? So my dear, the final temperature, you know that is what my dear? M1 C1 T1, that is plus M2 C2 T2, and that should be divided by heat capacity, that is M1 C1 plus M2 C2, M1 C1 plus M2 C2. Okay, keep in mind ये formula भी ध्यान रखना है आपको, because sometimes the gate examination कहाँ से question frame करेगा you cannot say. So guys, it's better you should keep in mind these formulas, and this should be very useful for your short notes, right? And what should be the delta S? इस पे entropy change क्या होगा while mixing? So my dear, your answer will be like this: M1 C1 ln bracket TF by T1. ये तो हो गया फर्स्ट का, प्लस माय डियर सेकंड वाले का M2 C2 T2, राइट ना? M2 C2 T2 सॉरी ln क्या होगा बच्चा पार्टी? इट शुड बी TF by T2. फाइनल टेम्परेचर तो TF होगा ना, राइट? आई होप यू गॉट इट अनिश, वेरी गुड. एवरीबॉडी गेटिंग ना? वेरी गुड माय डियर. अगेन आई विल गो अहेड, आगे चलते हैं थोड़ा सा. ओके, सो हियर we got M2 C2 T2 ln of TF by T2, right? And my dear, supposed to be, अगर mass supposed to be, some people say कि mass दोनों की equal है and specific heat equal है, so at that time अगर mass equal हो जाए और specific heat equal हो जाए, supposed to be अगर mass M1 is equal to M2 is equal to M हो जाए and specific heat भी equal हो जाए, then my dear, what I'll get? My TF will become T1 plus T2 by what my dear? 1 plus 1, that is what? 2, right? ये हो जाएगा. And my dear, delta S of universe क्या हो जाएगा? Delta S universe क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा मेरा my dear twice MC ln of what बच्चा? Arithmetic mean divided by geometric mean, right? It means इसको थोड़ा सा और जनरल फॉर्म में लिखें, so I can say अगर ऐसा है तो any कोई भी सिस्टम हो, that is delta S of universe, that should be equal to my dear number of blocks, bodies, you can say NMC ln of arithmetic mean divided by geometric mean, right? Arithmetic mean divided by geometric mean. बच्चा पार्टी, listen to me very carefully. Okay, so ये फॉर्मूला याद रखना है हमें, and it is applicable when my dear M1 is equal to M2 is equal to M, and my dear C1 is equal to C2 is equal to C. Now arithmetic mean I have already told you, ये क्या है बच्चा? Arithmetic mean है. अगर 3 टेम्परेचर होते हैं तो T1 plus T2 plus T3 divided by 3 होता, and supposed to be I have 4 temperatures T1 T2 T3 T4 summation divided by 4. Geometric mean means what my dear? Supposed to be I have 2 temperatures, so definitely this T2 is equal to TF, sorry, this TF will be equal to, supposed to be I have 2 temperatures, then T1 T2 T1 raised to power 1 by 2, that is under root. And supposed to be if I have 3 blocks, then I have 3 temperatures, so my dear I will put 1 by 3. So I have 4 temperatures, I will write T1 T2 T3 T4 raised to power 1 by 4, like this. I hope you have idea आ गया होगा बच्चा पार्टी. I hope you have an idea now.
Okay, so this is all about what, my dear? The mixing. ये mixing था objects की. Now my dear, I'll go to the what maximum optimal work supposed to be. I will discuss the another condition. Supposed to be, my dear, you have two blocks. आपके पास में दो ब्लॉक, right? You have two blocks. Okay, and you have installed an engine or device between these two blocks. Okay, आपने इसके बीच में इंजन लगा दिया. You have put an engine. Supposed to be M1 C1 T1. My dear, it is M2 C2 T2. It is what? Engine. So my dear, ये हीट हो गई यहां से QI, right? Q2. W is equal to क्या होगा बच्चा? ये हो जाएगा Q1 minus Q2. Am I right? हाँ या ना बच्चा पार्टी? Of course. My dear, see here now. अभी ध्यान से देखिएगा. You have these two blocks. You have installed the engine between them, right? So my dear, definitely जो delta S of universe होगा, delta S of one block होगा, that is what? First block का. Delta S of first block will be what बच्चा? क्या होगा? Delta S 1 plus delta S of engine plus delta S of second block will be 0 because it is reversible. So my dear, ये क्या हो जाएगा? Engine cyclic device has definitely entropy change. Cyclic device का 0 होता है. You know that. So my dear, what we'll get? We'll get, my dear, M1C1 ln. What, my dear? I'll get TF by T1 plus what बच्चा? M2C2 ln of what, my dear? TF by T2, and that will be equal to 0, right? So my dear, अगर मेरे M1 is equal to M2 हो जाए and my C1 is equal to C2 is equal to C, then my dear, I'll get TF is equal to under root of T1 into T2, that is geometric mean. ये क्या होगा बच्चा? Geometric mean ना. So what I'll get? I'll get W max, my dear. I'll get W max, WM twice MC twice MC हो जाएगा, right? So it is twice MC ln of what बच्चा? It should be arithmetic mean minus geometric mean. आ जाएगा? Yes or no? बच्चा पार्टी? Of course it should be. So my dear, now see, अगर मेरे पास ये आ जाएगा, so my dear, I can write W max for in general, that is what? किसके बराबर होगा? अरे भैया, इस Q1 minus Q2, तो Q1 क्या हो जाएगा? M1 C1 T1 होगा M2 C2 T2, right? So my dear, you have to finalize the TF as well, right now? So TF आपको मिल गया under root of T1 into T2. So it should be nothing but NMC ln of arithmetic mean minus geometric mean. So this formula you have to also keep in mind. ये भी formula ध्यान रखना है. And it is what? It is maximum work obtainable between when the engine is installed between the two bodies. जब दो bodies के बीच में engine install रहेगा. Okay? I hope you got it. And my dear, you know that reversible work, right? Reversible work in a steady flow process. Steady flow process में क्या होगा work? So in steady flow process, I will not derive in steady flow process, my dear. We have still till now the non-flow process, right? But whenever there is a steady flow process, my dear, I will get W is equal to minus what, my dear? Integration VdP. Okay, that you have to keep in mind. It's very easy, you know that, bacha party. Okay, so this is all about the steady flow process, right, bacha? What we are left with, I think we have covered each and every topic, but let me check. I think had I left anything else? No, we have converted. Okay, we have converted, and okay, there's another thing that I have to tell you, that bacha party, that what we have covered each and every topic, right, bacha party? There is nothing left. One more thing that you can add, my dear, that is what? Second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics.
is also known as what बच्चा? Qualitative law. इसको क्या बोला जाता है? Qualitative law. इसको क्या बोलेंगे बच्चा? Qualitative law भी बोलते हैं इसको. Okay. And one more thing that I want to add again. Supposed to be the lot of problem will face in the, आपको जो problem आएंगी that you will face my dear in entropy. Okay. So my dear, keep in mind कि entropy, what entropy does not represent. Entropy does not represent. What does not represent? ये क्या represent नहीं करती है? Bachapati, can you tell me what it does not represent? Yes, it does not represent what? Destruction of energy. Destruction of energy represent नहीं करती है ये, right? It does not represent the destruction of energy. ये नहीं represent करती है. Okay. One more thing. It does not represent destruction of energy. It does not. It represents only. It represent the what, my dear? Degradation. It represents only degradation of energy. Okay. And one more thing I want to add, my dear. Okay, we'll do analysis and then I'll let you know कि क्या conclusion होगा. Okay. So my dear, fixed mass analysis करें अगर हम, when we do the fixed mass analysis of entropy, then what results we have get it? Analysis, right? Fixed mass analysis. बच्चा पार्टी, listen to me very carefully, ध्यान से देखिएगा. Okay. So my dear, you know that first I'll go for the heat addition for reversible. You know that ds is equal to what, my dear? dq by t plus entropy generation. But now my dear, I'm going to talk about reversible. मैं reversible की बात करूंगा. Okay, reversible. So definitely entropy generation will be 0. So if entropy generation is 0, my dear, so what I'll get for reversible, that is dq by t, right? So my dear, if I'm doing heat addition process, in heat addition q is positive. If q is positive, my dear, then my dear ds is going to be positive, right? If I go for the heat rejection, so that q is going to be negative. So definitely, my dear, my ds is going to be negative, right? And my dear, supposed to be, if there is a adiabatic, if it is adiabatic process, so definitely q is going to be 0. So definitely, my dear, this ds is going to be 0, right? So my dear, that means what? It is going to be isentropic. So I can say reversible adiabatic process is always isentropic. Reversible adiabatic process, because the reversible adiabatic is what? Isentropic. That is, change in entropy is 0. That means entropy remains constant. So I can say that reversible adiabatic is always isentropic, right? My dear, if I talk about irreversible, I'll go in the next slide. Wait. That is irreversible process के लिए. If I go for the irreversible, my dear, then I have told you that entropy generation is not going to be 0. It is not going to be 0. That means my entropy equation will become ds is equal to dq by t plus entropy generation. Yes or no, बच्चा पार्टी? Of course it should be. यही होगा. अगर entropy generation हुआ, so definitely, my dear, what I'll get if I done the heat addition. So if you do the heat addition, my dear, so definitely your q is going to be positive, right? And your entropy generation is always positive or 0. So definitely, my dear, अगर ऐसा हुआ, so definitely you'll get जो ds होगा, that could be positive always, right, my dear? But if you done the heat rejection is there, that is irreversible heat rejection. So definitely q is going to be negative. If your q is going to be negative, and my dear, I already told you that entropy generation is going to be always positive. So my dear, there are two cases. Maybe it may be your ds may be what, my dear? It may be negative when your q is quite higher, right? आपका ये negative हो सकता है, right? My dear, it is also because maybe the entropy generation will be more, so definitely it will be positive as well. But my dear, if the magnitude of both they will same, then we'll get what? 0.
So that means ds also we are getting 0. That means we cannot say that, because if ds is equal to 0, that means what, my dear? It is isentropic. And if supposed to be the process is adiabatic, if process is adiabatic, my dear, if process is adiabatic, then your q is going to be 0, that is dq is going to be 0, and that will lead to, my dear, q is going to be 0, but S generation is going to be positive. So ds is going to be positive. So it is not going to be isentropic. So always remember, irreversible adiabatic is not going to be in a isentropic. But my dear, if you want the irreversible process to be isentropic, then that should be non-adiabatic. अगर वो non-adiabatic है, so we can say that is a chance. So my dear, यहाँ पे जो हम conclusion निकाल रहे थे, what are the conclusion we have drawn? So can I add one more point, that every isentropic process is not what? Reversible adiabatic. It's not reversible adiabatic. But every reversible adiabatic is what, my dear? Isentropic. वो क्या होगी? वो isentropic. Okay, so guys, this is all about what? Entropy. यही रहा entropy के बारे में total analysis that I have provided you. Okay, and one more thing that I want to tell you. See here, एक और चीज बता दूं मैं आपको, that you can write. My dear, if mass is same, if same amount of energy, if you are talking about same amount of energy, we are taking reference at what, my dear? Same amount of energy. So see here, let me, for same amount of energy, okay, for same amount of energy, what, my dear? Entropy associated. अगर same amount of energy, then entropy associated क्या होगा? Yes, anybody have any doubts? Then guys, please put your doubts in the comment section. Entropy associated is higher at lower temperature. That means if you have fixed the heat, definitely low temperature है तो dq by t, that will be very high. Low temperature, entropy associated is higher at lower temperatures, right? At low temperatures. And lower at higher temperature. At high temperature, definitely the entropy will be less. Lower at higher temperature. Okay. Now, my dear, if you are talking about if same mass, that is for same mass, you're talking about the same mass, my dear, then I want to tell you. See here. क्या होगा? Entropy associated is higher at higher temperature, because उस time पे is higher at higher temperature. And lower at low temperature. Because temperature difference क्या होगा? कम होगा तो definitely उस पे entropy क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. अगर temperature difference बढ़ गया तो definitely heat बढ़ेगा. Heat बढ़ गया तो definitely क्या होगा? Because energy is not same this time. This time mass we have keep same, right? So keep in mind these two statements. That is, whenever there's amount of energy, when we are talking about in concern with the amount of energy, so at that time entropy associated will be higher at low temperature and low at high temperature. And my dear, when talk about the mass, so definitely at that time, if the temperature is higher, entropy will be higher. If the temperature is low, entropy will be low, right? Okay, that is the degradation of energy will be low. Okay, कम होगा उस time. Okay, बच्चा party, I hope you got it.
एवरीबॉडी बात समझ आ रही है? हाँ जी, अनीश, महेंद्र, गाइस प्लीज टेल मी, हैड यू गॉट इट दिस थिंग? समझ आ रही है चीजें? ओके, सो माय डियर, हियर आई गो. Okay, so now my dear, we are going to talk about tedious relations we have done, right? We are done with the work heat transfer, we are done with the concept, right? And my dear, always remember कि whenever they ask a question on heat engine, they'll ask the combined equation, sorry, वो जब भी कभी, no, I'll tell you the trick for the numerical. My dear, whenever in numerical, whenever you see more than one thermal reservoir, more than one or more than two, you can say more than two thermal reservoir, that means what? Source or sink, huh? More than what it is I'm talking about in concern with source or sink, then वो जो numerical होगा, then that numerical will solve by, वो किससे solve होगा बच्चा? Will solve by Clausius inequality. Clausius inequality से ही solve होगा वो numerical. उस पे आप दुनिया भर के फॉर्मूले नहीं लगाएंगे. ओके, कीप इन माइंड दिस थिंग, वो Clausius inequality से ही solve होगा. There is nothing, there is no other way. Okay, बच्चा पार्टी, I hope you got it. Okay, yes my dear thing. Now my dear, I'll tell you, we have already told you that about Gavi-Stoddola pure substance, right? Rho, everything we have told you, right? Still we are left with the compressibility factor, right? Now अभी compressibility factor नहीं बताया है, am I right? So my dear, now we'll talk about the compressibility factor. Compressibility, we are done with the compressibility बच्चा पार्टी. Okay, so see here, ध्यान से देखेंगे, listen to me very carefully. Compressibility क्या होगा? So my dear, you know that Z is equal to क्या था बच्चा? Z is equal to, it is denoted by Z, and that is what my dear, किसके बराबर था वो? It is VA by VI, right? And what it indicates? It indicates the volume occupied by the what? Volume occupied by the gas per unit of ideal gas. Ideal gas के मुकाबले actual gas कितना volume occupy करता है, that is represented by the compressibility factor, right? That is Z. My dear, when एक बात याद रखिए, the value of Z will be 1, it may be less than 1, it may be greater than 1, right? So when the value of Z is 1, my dear, that means what? That real gas will become ideal gas. वो real gas किसमें convert हो जाएगी? Ideal gas में. And one more thing, my dear, when Z is less than 1, when Z is less than means 1 means what, my dear? जब less than 1 होगा, it means what, my dear? VA is less than VI. Means actual volume is quite lesser than that of what? Ideal volume. So at that time, what, my dear, क्या हुआ? Attraction dominates. Attraction उस पे attract, जो force of attraction होगा, that is quite high. That is force of attraction dominates. वो ज्यादा होगा, right now? And this will be, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? Easier to compress. ये बहुत easily compress हो जाएगा. And my dear, when Z is greater than 1, it means बच्चा पार्टी कि क्या है? VA is greater than from EI. And if it is so, my dear, it means force of repulsion is quite high. Force of repulsion क्या किया? Dominate कर गया, right? And if it dominates, my dear, then my dear, I want to tell you, if repulsion is high, then it is quite very difficult to compress. Very difficult to compress. Very difficult to compress.
I hope you got it, bacha party, this thing, right? And my dear, always keep in mind that is reduced pressure and reduced temperature. So it is nothing but a ratio of pressure to the pressure at critical point, and temperature, reduced temperature is nothing but a ratio of what, my dear? Temperature to the temperature at critical point. This thing you have to keep in mind. And my dear, now we are left with another one, that is okay, 114. Now my dear, we'll deal with what, वंडर वाल इक्वेशन. आपको वंडर वाल इक्वेशन भी बता दूं मैं. So that is quite very, you know, इसको ध्यान में रखिएगा. यहां से एक मार्च 2016 में एक क्वेश्चन आया था, that is quite very easy. I'll tell you. So my dear, this equation is nothing but p plus n square a by v square. Now some people write like, sir ये n square कैसे आएगा? यहाँ पे तो a by v square होता है, right? I'll tell you why. v minus nb is equal to nrt, right? बच्चा पार्टी, अगर आप n का वैल्यू 1 रखेंगे, n is nothing but number of moles. So if it is n is equal to 1 mole, my dear, you will getting the equation p plus a by v square. And what is, my dear, here v minus b is equal to what बच्चा? rt, right? ये क्या रहेगा? rt. And I want to tell you, यहाँ पे जो a का वैल्यू होता है, that is a is nothing but a count for what, my dear? A is nothing but a force of attraction or repulsion. b जो होगा, b is nothing but it is account for the co-volume occupied by the gases. ठीक है, जो वॉल्यूम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितना वॉल्यूम सॉरी जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होंगे that get that occupy how much volume, that has been account by this factor b, right, constant b. So a का वैल्यू जो होता है बच्चा, it is what, 27 r square t square, r square critical point का temperature square divided by 64 critical pressure, right? And my dear, इसका यूनिट क्या होता है? ये 2016 में पूछा था, m5 what, my dear? kg per second square. ये यूनिट पूछा गया था गेट 2016 में. Year 2016 में they have asked the unit. Okay, my dear, what about b? So b is nothing but what बच्चा? It is RT critical temperature divided by 8 into PCR. Okay, I hope you got it. And my dear, इसका यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब per kg, because it has been added with the volume. So volume क्या होगा? मीटर क्यूब per kg तो होगा बच्चा, right? I hope you got it. So इसका यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब पर मोल मान लीजिए, या किलो मोल मान लीजिए, या मीटर क्यूब पर केजी मान लीजिए. It is equal to that only. Okay, बच्चा पार्टी. So this is all about what? Compressibility, right? And I think you have seen that Joule-Thomson coefficient, TDS equation, वो तो मैंने आपको करा ही दिया है. Joule-Thomson coefficient, always remember कि Joule-Thomson coefficient is zero. And my dear, one more thing that I want to say कि that जो internal energy होगी, that internal energy and my dear enthalpy, internal energy and enthalpy for ideal gases. I'm talking about ideal gases. Okay, so these are, enthalpy is nothing but a function of temperature only for ideal gas. Okay, if I talk about internal energy, that is what, my dear? It is function of temperature only for ideal gas. And अगर बात करें, so it is function of what, my dear? Temperature and volume for real gas. ये बातें ध्यान में रखनी होगी. Okay, बच्चा पार्टी, I hope it's clear to you. Anybody have any doubts? Please let me know, बच्चा पार्टी. Yes. Anybody have any kind of a doubt? Then please let me know. Yes, Mahendra, Anish, and the guys, those who are watching, please tell me. Yes, बच्चा पार्टी. Okay. So guys, this is all about
all about what? This is refrigeration and air conditioning. I want to tell you, we are going to continue this session on 27th. 27th को हम करने वाले हैं ये सेशन. 27th what? 27/12/2020 को हम लोग करेंगे ये सेशन, and we are going to deal with RAC, पावर प्लांट इंजीनियरिंग एंड आईसी इंजन. ये तीनों चीज कराऊंगा मैं उस दिन. ओके, ये तीनों चीज RAC, IC engine, power plant. This will be happen on what, my dear? On 27th. 27th. Today we have finished RAC. RAC तो पूरा कर लिया हमने बच्चा पार्टी. So this is from my side, and if you have any kind of a query, you can just ask me. Okay. So बच्चा पार्टी, don't forget to attend this session on RAC, power plant and IC engine on 27th. इसको हम 27th को लेकर आएंगे. Okay. So guys, this is from my side. If you have any kind of a query, and I hope कि ये आपको सेशन काफी पसंद आया होगा and it is very helpful for you guys. Yes. Now I want to tell you कि बच्चा पार्टी, it is Getathon, Getathon, right? So you have to run, right? आपने काफी ज्यादा मेहनत की है, so it's time to revise each and everything, and whatever the things I have written in the slides, you can use it as a screenshot and you can utilize it as a short notes. शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत ही यूजफुल सेशन रहा है. पूरे जो है आप जो है 3 घंटे मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बनवा दिए हैं आरएस के, थर्मो के. राइट. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू बच्चा. क्या कंटिन्यू करेंगे हम करेंगे कंटिन्यू अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स. सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड फॉर लिसनिंग मी. टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर. विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास and thank you once again. And my dear, one more thing that I want to add, if you have came first time in the channel, then my dear, do hit like, share and subscribe the session, as well as you can subscribe the channel so that you will get latest notification regarding any live classes. Okay bachcha wadi. So thank you so much guys. Take care, bye bye, shabba khair. And jate jate, one more thing that I want to add, please stay at home, stay safe, stay online at testbook.com. Jai Hind, Jai Ma Bharati.